Hello, and welcome to Football with Daksh. कैसे हो आप लोग? Welcome to another stream on the channel. Nice to have you guys here, and we're 2 days away. We are 2 days away from club football being back. Actually, if you watch the Bundesliga actually returns tomorrow, if I'm not mistaken, right? Let me just check quickly. कल आयरलैंड का लीग है, कल बुंडेसलीगा भी शुरू है, लीगा भी शुरू है, ला लीगा भी शुरू है. तो फंटास्टिक. फुटबॉल इज ऑफिशियली बैक टुमारो चैट. बट लीग फुटबॉल जैसे हम जानते हैं, हमारे क्लब्स जानते हैं, प्रीमियर लीग जानता है, returns back on the weekend. We have made it through. We have made it through the international break, and yeah, today I thought instead of a preview, we will do after seven. Now that teams have played 7-8 games now, we will now see what are the expectations from the team and what's the worst that can happen to a team from this point on till the end of the season. Of course, it's all early doors, man. अभी कोई भी टाइटल जीत सकता है, अभी कोई भी मिड टेबल जा सकता है, अभी कोई भी रेलीगेट हो सकता है. सो इट्स नॉट सेट इन स्टोन, but we will do what we can in terms of guesswork. Tomorrow we will do a preview show for the Premier League games on the weekend. मजे आएंगे उन चीजों में. The thumbnail couldn't have been more appealing. Thank you so much. W perceptions, bhai. W perception of yours also. Baldy says Revat हो गया 5 minutes. अच्छा हो गया था ये तो. Yuman Gurung with a United. Is that a United kit? I think it's a United kit. Thank you so much for joining in. FDJ is also here as usual. Soumya Deep is also here. Thank you so much, Soumya Deep. भाई जो आप ये थीम देख रहे हो, सौम्य दीप ने बना के दी है इस चैनल के लिए. लव यू सो मच. चार्ट आपको यहाँ पे मेरा ट्विटर दिख जाएगा, आपको पीछे फुटबॉल विद दक्ष दिख जाएगा. ब्यूटीफुल मरून किट, symbolic of the Arsenal 2005-2006 kit as well. दक्ष भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? दक्ष भाई आ गए. Going back to hostel, needed your stream. I knew it, Ujjwal. I knew it. Rupinder, कैसे हो? Niger boy, how are you? Daksh bhai, what is the intro song if you can tell? I'll have to look at it and see. मैंने ये epidemic music से उठाया था. I will tell you in another stream, I promise. But I think जब मैं ये intro play कर रहा हूँ और अगर आप Shazam करोगे, I think you can pick this song out very easily. Yo, कैसे हो? Yash, Shreyas is also here. Rupinder, Anirudh says nice theme. Soumyadeep says we are cooking. कैसे हो Siddharth? Hello Puneet. Bundesliga mentioned as well. Yes, Bundesliga is also starting tomorrow. And Bundesliga भी आ रहा है. Football will be finally back. नीरज तू फिर आ गया, आ जाता है रोज 5 बजे. क्या ही करें दोस्त. We are here to cook. How many subs needed for 21k? I think, let me just confirm. We need, if I have to guess, I think like 50 subs. No, 33 subs. We need 33 subs for 21k. Babu, how are you? Paul Pogba statements. Yes. कैसे हो? India versus New Zealand first inning was like Papa cycle तो मैं अच्छा ठीक है. I didn't watch the cricket, but I heard it was bad. 1 second. Yeah. India versus New Zealand first inning was like पापा साइकिल की तो ठीक है.
Road to 100k, road to 100k. I have decided. I will try from next month or this month. Next month thoda mushkil hoga because I will be in India as well. But I will try 60 hours of streaming per month. Ideally, so I was just reading some, believe it or not, by the way, social media growth पे कुछ academic papers हैं. And the key to growing rapidly, apparently, the sweet spot is 90 to 120 hours के बीच. If you stream 90 to 120 hours per month, I think apparently that is the sweet spot for rapid growth. Now, 90 hours per month means 3 hours a day. 120 means 4 hours a day. And I think a lot of people do it on Twitch and they do it themeless. मतलब वो आते हैं, बैठते हैं और chat जो बातें करती है करते हैं. बीच बीच में they react to videos and all, which probably kills a lot of time. You can't really do that on YouTube. But I will try and aim for 60, or at least see how much I can gather in October itself. November में फिर से international break होगा, streaming will go down. We'll see though. We'll see how it goes. I want to see those. I want to try and replicate the findings of that academic paper. कैसे है? मुझे scratch कर दो, says Maraska's right ball. Of course. Gary bhai, long time Gary. How are you? You always stream when I'm busy with something, says Puneet. I know, because I just don't like Puneet bhai, man. What do I do? Renesu is here. Ananya is here. Very happy that club football is back. Daksh bhai, you coming to India? Yes, brother. I am coming to India. 7th or 8th November ko I will probably land in India. And I'll be here for a couple of weeks. And then I will go back. But I will basically be celebrating my birthday in India. Daksh bro, what scenes of Diwali coming to India? Diwali, I won't be there, unfortunately, because I have a lot of stuff to do here in Dublin in terms of classes, in terms of other work. बट आई विल बी देयर बर्थडे पे. मेरे को बुलाओगे कि नहीं? सो रेनिसू को तो मैं गलत एड्रेस दे दूंगा. आई कॉल हिम टू अ नाइस, I'll give him the address of a nice place and I'll be like, तू आजा, ऑर्डर ये सब कर ले, पैसे मैं दे दूंगा. And then I will not show up. I'll ghost him. I don't see Mohak having rapid grow with 300 hours a month. 300 hours a month is insane. But देखना पड़ेगा. Membership link, अभी the bot will throw it up, यार Harsh. But thank you so much for asking. Don't worry. As soon as it comes, Harsh, I'll point it out to you. Just wait for the stream elements automated message. Otherwise, go on my channel. उसके आगे /join डाल दोगे तो आपको membership link मिल जाएगा. So मेरे channel पे जाओ. चैनल के आगे /join कर दोगे तो आपको मेंबरशिप के पेज पे ले जाएगा. आज सुपर चैट लेने आ गए. यस ब्रदर, यस. And of course, you can also do this. You can also get the membership through here. So Harsh bhai, if you want a membership, this is your gateway to a membership. And of course, you can also use this link. So chat, like we always do before we start streaming and we bring about football. आज हम क्या रैंडम बात करें? Oh yeah, I had a very sometimes, you know what chat क्या होता है? You wake up and you have a random recollection of something which happened in your childhood. Okay, आज मेरे साथ ये हुआ. Today I slept for a long time and I woke up and I suddenly had this very weird recollection of something that happened to me during my childhood. So during my childhood, I was sick, and I was sick to the point where I couldn't walk and I couldn't get up. Like my legs stopped working. And I just don't know why I remembered that all of a sudden. मैं शायद से 6 या 7 साल का होऊंगा. And I was sitting down, and then when I tried to get up, I couldn't get up. And मेरी नानी घबरा गई, मेरे पेरेंट्स ने ट्राई किया. They picked me up, then they made me stand, and then they asked me to walk, and I was waddling like a bloody penguin. And so they took me to the hospital because मेरी मॉम को लगे गुलन बारे सिंड्रोम नहीं हो गया मुझे. आज मैंने अपनी मॉम से इसके बारे में बात करी. आई आस्क्ड हर क्या हुआ था मुझे. So apparently मेरी मॉम को डर लग गया कि गुलन बारे तो नहीं हो रहा. It took me to a hospital, and apparently it was a viral disease, like viral fever types हो गया था, which affected my ability to walk. So that is apparently the worst viral fever I've had. But what is the worst illness you've suffered from? ठीक है, I know for some people it will be COVID, for some people it will be an accident. You are free to share, or you can choose not to share as well. मतलब ज़्यादा trauma करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त. So share what you like to, but if you've suffered, it doesn't even have to be the worst, but something which is memorable to you in terms of your injury, you can let me know. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरी चैट डेड कैसे हो गई?
Yes. Harsh, thank you so much for joining the membership and welcome to Youth Academy. 146 people are already here. First of all, W's for Harsh Hojan. Thank you so much, mere dost, for joining the membership. The link to the Discord, I will update it today. So you can join the Discord and join a nice community of people. We are looking for most people, mostly new people, so that the Discord keeps fresh. And of course, thank you so much for joining the membership. 144 people are here. Stream like कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है. Subscribe if you are new. We're on our way to 21k. We are 33 subs away from 21k. Don't you think Ratan Tata deserves Bharat Ratna posthumously? Thoughts? या वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी यार. Harsh Baba became dengue. Yeah, dengue is horrible यार पुनीत. मतलब dengue fever is terrible, especially during monsoon जब मच्छर वच्छर भर जाते हैं. And if you don't take care of your surroundings ना, it's a huge issue. तो थोड़ा problem हो जाता है. IBS, I know so many people who suffer from IBS, man. It's difficult. Blood cancer stage 4. You have a stage 4 blood cancer? I'm so sorry. Stage 4 brain cancer. Okay, don't joke about cancer, guys. Please don't joke about cancer. Typhoid, bored legs. Oh yeah, nothing. I'm Superman. भाई मुझे फीवर हुआ था और उसमें मेरे पेशाब का रास्ता दर्द करने लगा था. या दैट ऑल्सो हैपेंस फॉर मी. इट्स हेडेक. फीवर हो जाए लेकिन हेडेक नहीं. हेडेक्स का मेरे को तो क्या, आई गेट सिवियर माइग्रेन्स व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड और समथिंग और द अदर हैपन. बट मोस्टली स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से मुझे बहुत सिवियर माइग्रेन हो जाते हैं. लाइक नॉन आई कैन नॉट फंक्शन उसके बाद. आई हैव टू टेक मेड्स एंड आई हैव टू स्लीप एंड आई रियली कांट डू एनीथिंग एल्स फॉर द डे. मतलब एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम माई टेम्पल एंड इट गोज ऑल द वे टिल द बैक ऑफ माई हेड. इट्स लोगों को यहाँ पे सर दर्द होता है, मेरे को टेम्पल से लेके साइड तक होता है. एंड आई यूज टू थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर या टेक एक्सपोजर, बट नहीं, मेरे को सडन समटाइम्स आई वेक अप विद अ ब्लडी हेडेक मैन आफ्टर स्लीपिंग अ लॉन्ग टाइम. एनी हेल्प यू नीड. मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर है देव भाई, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग यार. पोस्ट वायरल myalgia is crazy this season. Just stay hydrated. Oh damn, I don't want that myalgia, man. But thank you. AIDS. Uh, Please don't joke about these things, man. I hope आपको नहीं हो, but I know so many people, who contract serious illnesses, just like that. Bone minor crack in pinky finger. Ooh, spine injuries. Terrible, man. Cold. Finally, PL is back. Yes. Leg surgery. Ebola, AIDS. I knew, man. There are always some jokers in the chat. For me, it's headache, fever ho gaya. I had stomach infection, couldn't eat solid food. It took 1.5 weeks to get well. God damn. Yeah, serious stuff, brother. Dengue. Dengue. I mean, I guess, sure. मॉड बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई? तुझे मॉड चाहिए था तो मुझे बोल देता यार, मैं दे देता तुझे मॉड ऐसे ही, कोई बात नहीं. बट ये लो भाई, स्टैंडर्ड मॉड बना दिया तुझे यार. ले ले भाई, तुम भी मॉड ले लो, खुश हो जाओगे. साइमल्टेनियस डेंगू एंड टाइफॉइड इन द 7th ग्रेड. फीवर हुआ था, बट रात को सोने के टाइम ड्रीम्स में लगता था कि समवन इज चेजिंग मी, आई एम रनिंग. वो तो आई गेस इज जस्ट स्ट्रेस की वजह से एक नाइट में मैनिफेस्टेशन हो जाता है. मेरी एक टांग नकली है इज द वर्स्ट थिंग दैट यू एवर सफर्ड फ्रॉम. मैंने एक जॉब छोड़ा मैंने एक बार जब छोटा था ऑपोजिट लेग पर पट्टी बंधवा ली थी और चोट दूसरी लेग पर थी. स्मार्टेस्ट चेल्सी फैन, स्मार्टेस्ट चेल्सी फैन. नो वे सौम्यदीप, you're joking. You don't have stage 4 brain cancer, man. Shut up. Don't say like these. मेरे को भी टेम्पल पे होता था जब होता था. ऑल राइट. डिप्रेस नहीं होते, फुटबॉल पे चर्चा चालू करते हैं. डॉक्टर वाईफाई ने क्या लिखा है? डॉक्टर वाईफाई वाज द गाय हु सेज ही हैज ब्लड stuff, right? Abhishek, thank you so much for joining the membership as well. Welcome to the channel. And like I said, I will update the Discord link and you can join the Discord. W for Dakshbhai, thank you so much. Can you explain how to write script for football video? Basically, how to do research, what goes behind the scenes of. I honestly, Revat, I am still figuring it out myself. I will tell you this. Yesterday, I came across a YouTube video which was absolutely amazing. Okay. Um, it's a new channel called Technicolor. उसकी पहली वीडियो थी about Arteta and Arsenal, and I think he's an Arsenal fan. I mean, if you're into this stuff, sure, but watch his video, man. I watched this video. I'm not even joking. At least 2 to 3 times.
wants to understand, wants to, of course, just watch it for the first time, but to understand music, his scripting, and a lot of those things. Yeah. So yeah, if you want to join some, if you want to watch a really really good, well edited, well scripted, well narrated video, I think this is one of those videos that you should do it. Okay, you watch it to the quality is just top. Bhai, it's a top video, man. I will aspire to be like him, man. That sort of scripting is. But Trevor, to answer your question, I wish there was a standard template, but clearly there's not. I've asked help from Baba, I've asked help from Muktesh. They have their own opinions. I've tried to incorporate it, some of them, in how to make a video and how to edit them, and the use of music and the use of emotion. ये सारी चीजें करता हूँ मैं. Are you Ashish Chanchalani fan? Not really, man. I haven't watched too much of Ashish Chanchalani. Like, I remember watching him a few times, but not that much, to be honest. All right, let's start talking about footy, because football is back. And now that our teams have played some games, like 7 games Premier League mein ho gayi hain, we have this sort of table which I shall share with you right now. Bing bang bong. Okay. So we have this table with us. Let me just increase it. All right. So, like I said, Liverpool number one, City number two, Arsenal third, Chelsea fourth, Villa fifth, sixth, Brighton seventh, Newcastle eighth, Fulham ninth, Spurs. Oh, damn, Spurs are in ninth or what? 10th, Nottingham, 11th, Brentford, 12th, West Ham, Bournemouth, and then Manchester United. Now, हम इधर तक ही ले रहे हैं because उसके बाद the usual suspects are there and United को गिनना जरूरी है. Now, ये फेवरेट स्टैंड अप हैंड अप वाले बाद में करेंगे. लेट्स टॉक फुटबॉल नाउ. इट्स 17 मिनट्स. सो अगर आप अपनी टीम का स्टार्ट देखो, नो मैटर व्हाट टीम के फैन यू आर, स्पेशली इफ यूर अ प्रीमियर लीग फैन, हाउ व्हाट वुड यू रेट योर स्टार्ट इन रिलेशन टू, चाहे आपके कितनी इंजरी इश्यूज हुए हैं, चाहे कितना टर्मोइल हुआ है, चाहे आपने ओपोनेंट्स कैसे फेस किए हैं, जितने भी कैवियाट्स हैं, आउट ऑफ 10 how much would you rate your own team ka start in the first 7 games? Like I said, I think Liverpool fans can be super happy with the start because they have, look, I understand a lot of fans claim that Liverpool ka start easy hua hai, but as the popular saying goes, there is no easy games in the Premier League, right? And I think ये हम चीज भूल जाते चाहे हम लिवरपूल के स्टार्ट पे कमेंट करें, that they are starting with the new manager. So yes, the games might be easy, but it's a new manager, new system, they have some contract issues going on. But despite all of that, being top with just 2 goals conceded, by the way, 2 goals conceded is an insane amount of tally that they have. 11 का जीडी, 18 पॉइंट्स. एंड जोक्स असाइड, अगर ये फॉरेस्ट से वो वंडर गोल नहीं खाते, मोस्ट लाइकली वो गेम भी जीत सकते थे. All right, City 7 on 10, 5 on 5, Prem में 10 on 10. All right, all right. We're just talking about the Prem right now. City 7, 8.5 on to Arsenal, 9 by Mbappe Mishra, who's a United fan. Okay. 9 on 10 says Raj. All right. 7 on 10 for City, 8.5 for Chelsea. Manchester United ka 14 now has two meanings. United ka chada. 8 on 10 says Abhishek. 9 on 10 says Ronak for Liverpool. 8 on 10 for Arsenal. 1 on 10 for United. 7 on 10. 6 on 10 Rodri KDB injury. Foden out of form. As a City fan, 8 on 10. We've played horrible football, but we've grinded out results, says Aryan. I agree. There are 9. 8 on 10. 10 on 10. 9 on 10. Glory, glory, man. Minus 9 on 10 is what I'm guessing you're going to say. 8.76, 10 on 10 for we'll get to La Liga as well, don't worry. We'll just starting with the Premier League because most of the fans on the channel are Prem fans. All right, so I think agar it's nice to see most of you are optimistic about your teams and जिनका जैसे performance चल रहा है. I wish Karan जैसे fans होते जो Aston Villa fans है, Joshua was here who's a Newcastle United fan as well. You would have loved their input as well. Now I think अगर आप लिवरपूल के फिक्सचर्स देखोगे, there are some very tough fixtures which are coming up for Liverpool. Chelsea being one of them. उसके बाद Leipzig, then Arsenal, then दो बार Brighton, and then Leverkusen, and then Villa. Like till 9th November, which is I think when the next international break will roll around. Till 9th November, they have pretty good, like tough, complicated run for fixtures, chat. Now I want to ask you guys, चाहे आप लिवरपूल फैंस हो या नहीं हो,
in the next few fixtures before the next international break, do you see, हमने इस पे थोड़ा सा मिनी डिस्कशन किया था yesterday, but do you see Liverpool holding on to the first spot? Because I personally feel they can, but max maybe they will slip to second spot. What is the worst that can happen to Liverpool in the next few games? And now, if you're a Liverpool fan, especially if you're a Liverpool fan, um, what are your expectations based on your start right now? Have your expectations changed? Has Slot slightly surprised you? What do you think is a reasonable expectations from Liverpool at this point of time, मेरे हिसाब से? City is coming to hunt, says Sandeep. No, they'll be top three. I think they'll lose one Big Six game. Hopefully, ours, says Ananya. No, Liverpool won't hold. Yes, if our starting 11 stays fit, says Ronak. Draws. Look, I personally think Liverpool, out of the next one, I think Chelsea and Arsenal will be very big games. I think for the rest, they can win this one. They can win these. I think Chelsea, देखना पड़ेगा, but it's at Anfield, so I'm assuming it's not. I will still favor Liverpool in that game. Against Arsenal, it'll be tough because it's at the Emirates. And if Arsenal squad is fit and then Liverpool squad is fit, they might still get something out of it. But I see them winning Brighton in the league, and I see them actually winning Aston Villa as well. If in the next four Prem games, which are Chelsea, Arsenal, Brighton, and Villa, they win three of those, I think they stay top two for sure, man. I think वो top two तो रहेंगे ही रहेंगे. Injury नहीं होनी चाहिए. Liverpool will drop to third. Worst, they will slip to three. Draws are his worst results. Injury नहीं होनी चाहिए. International break खत्म नहीं हुआ और दूसरा सुन के फिर से दिमाग खराब. I know, 4 weeks में फिर से है, brother. It's so sad. Arne Slot has really impressed me, playing with zero signings with very hard run till now. I think Klopp का भी इतना अच्छा start भी था. Yeah, I think Arne Slot has कुछ है उसका कि first इतने games में इतने wins, first Liverpool manager ever. I think Liverpool will finish in the top four at the end of the season for sure. I Do you think Liverpool's ceiling is just top four, or is it top three, or is it top two? Expectation Rishabh ke hisab se still remain the same, which is top four. If we manage to stay at least in top two after this run of fixtures, then I can see us competing for the Premier League. That is it a good shout? Because let me see Liverpool's ke aage ke fixtures. Well, November in general is very tough. I'll tell you what, if by 4th December, when they play Newcastle United, if by 4th December Liverpool are top two, they are Premier League challengers for sure. I know half a season होगा, but मेरे हिसाब से Premier League challengers तो definitely होंगे. You have to bring them in the conversation. अभी भी I still see a lot of people be a little hesitant in saying that Liverpool will make it a 3-horse race. And I understand it, because I think for a lot of people that caveat कि Liverpool का इतना easy start हुआ है, it makes them a little कि like maybe Liverpool का अच्छा start हुआ है, ये हुआ है, वो है. But I personally think ये games तो जीतने Liverpool को चाहिए थे, वो जीत गए हैं, and they have started with an excellent cushion to go into the later part of the season. मेरे हिसाब से Liverpool की expectation should be not top four, but top three for sure. I think they should be the ones who are at least cementing a third place, if not second or first. ठीक है? They are, मेरे हिसाब से, if you count the top three best teams in the league, they have to be there. Scary Arsenal will cook you. I think Arsenal versus Liverpool will be a hell of a game. Expectations still remain top four. 2 wins, 1 draw. 4 games, है ना, brother? Top two. Yeah, I think Liverpool ki expectations should be top two. Because I think even though it's been 8 games, I think Slot has shown us enough. Again, the next 4 games will tell us a lot more about Liverpool. We'll have a lot more data to judge Liverpool about. We've seen Ange Postecoglou have a fantastic start to the life in the Premier League, but a start does not equate to a good finish. Similarly, जैसे Chelsea का last season एक बुरा start हुआ था, but they ended up finishing in 6th. A bad start does not mean a bad finish as well. So Slot has got a well-oiled team. I don't think he is tested enough. All right. What about Saka? Is he fine? अभी तक कुछ नहीं आया दोस्त. I think with Liverpool they're connecting very well, but some certain points I can see them is top four and draws. All right, what do you guys think is Liverpool's weakness then? जैसे अगर कोई लोग कह रहे हैं कि top two नहीं, वो top four करेंगे या दक्ष भाई eventually they will fall off. What do you think is Liverpool's weakness then that will cause them to fall off? Because अगर आप टीम को देखो, the team is pretty much the same जो last season थी.
And that team was good enough to compete for the title until like the last few weeks. I think then they ran out of steam because of injuries and Salah out of form and all those stuff. But because lack of signing provided obviously a big change in the dugout. Ideally top four, but if they overachieve, then one cup UCL semi-final. Liverpool will make it a three-horse race, but City has a horse made of machines, so can't say until. Of course, title favorites वगैरह ये तो मार्च में ही पता लगेगा. बट क्या वो उस एरिया में हैंग अराउंड करेंगे जहां पे सिटी एंड आर्सेनल हैं अभी के लिए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन? आई डोंट नो. वो देखना पड़ेगा हमें. दक्ष भाई अभी बहुत बचा है. इंजरीज भी होंगी फर्स्ट 11 को. बहुत अच्छा है लिवरपूल की, लेकिन अगर इंजरी हो गई तो ड्रॉप होंगे पॉइंट्स, इसलिए टॉप फोर कह रहा हूँ. बट हर्ष, व्हाट आई फील इज यू कैन से दिस अबाउट एनी टीम, राइट? अगर आर्सेनल को और इंजरीज हो गई दे विल स्लिप. अगर सिटी में एक सीरीज इंजरी और हो गई दे विल स्लिप. चेल्सी में इंजरी इसको हो गई तो दे विल स्लिप. आई थिंक यू कैन कैवियट दैट फॉर एनी पॉसिबल टीम, राइट? अगर ट्रेंड चला गया क्योंकि लिवरपूल की अपनी नियत ही नहीं है. ऐसे बात नहीं है. लिवरपूल की खुद की नियत बहुत है. बट अगर ट्रेंड जाएगा भी ना, आई डोंट थिंक ही गोज फॉर मनी. आई थिंक in a scenario where Trent leaves, he will go for free, and that will be at the end of the season, no matter what. And I think he would want to leave winning something great with Liverpool. But I don't think he'll leave. Daksh bhai, can you explain what is the pivot role in football in some other time? I think Nidhi has made a video on this, by the way, a short on this. What about Saka? He is fine. Cap se mat likho, Revert, ban kar dega bot aapko. Yes, because lack of signings. All right. That's life as well. Obviously, mid squad depth. Squad depth. Injuries are the weakness. Chance creation. think I think they have one of the highest XG created. Squad depth is a weakness. एक्सपेक्टेशन होती टॉप टू की अगर स्क्वाड डेप्थ होता दक्ष भाई. यूसीएल भी है ना. देखो लिवरपूल ने मिलान को पीट दिया, फिर बोलोनिया को पीट दिया. अभी उनके पास लाइप्जिग है और उसके बाद मड्रिड है ना. आई थिंक उसके बाद उनके सारे कॉम्प्लिकेटेड फिक्सचर्स खत्म हो जाते हैं, राइट? अगर आप लिवरपूल के यूसीएल फिक्सचर्स देखो तो मिडफील्ड, मोस्ट पीपल थिंक इट्स बेंच स्ट्रेंथ इन एरियाज ऑफ मिडफील्ड, नैरो स्क्वाड, इंजरीज, fixture congestion and bench options. Liverpool की weakness is defense. One injury, it's over. Like I said, I think that's for every team. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सिटी स्ट्रगल करेगी इस बार पीएल में. भाई सबको ऐसा ही लगता है स्टार्ट ऑफ द सीजन पे, और फिर दिसंबर तक आते आते सिटी ना अपने मतलब सबके ऊपर मुंह देती है. Liverpool have conceded 2 goals, but the weakness in defense is still there. Like they've conceded early goals. Palace couldn't score 3v1 versus them against forwards working brains. They'll struggle. Forwards with working brains, they'll struggle. Okay. So basically, you're saying that even though they have kept a clean sheet a lot of games, it's just about the fact that talented forwards against Take, they will struggle. And to be fair, this hypothesis will be checked literally in the next 4 games. Because in the next 4 games, Villa have talented forward line, Arsenal have a talented forward line, Chelsea definitely have a talented forward line, and to an extent, even Brighton can do something about it. So yeah, I think the next 4 games are a good test for all this hypothesis. I guess in comparison to other teams, Liverpool bench is much weaker. यार लिवरपूल का अभी गेम जब होगा चेल्सी के साथ, किएजा इज इंजर्ड, डाउटफुल है. हार्वी एलियट इज मिसिंग एंड एलिसन इज मिसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन देयर बेंच, लुक, अगर मेरे को लिवरपूल की टीम चेल्सी के अगेंस्ट बनानी है, कैलेहर होगा, ट्रेंट होगा, वैन डाइक होगा, कोनाटे होगा, रॉबर्टसन होगा, Gravenberch, McAllister, Zoboslai, Salah, Jota, Gakpo या Diaz. Most likely Diaz ही होगा. Yeah, that is a solid team, man. And on the bench, you will have Gakpo, you will have Nunes, you will have Curtis. Who else? और कौन होगा लिवरपूल के बेंच पे? VVD, I think, has been one of the best CBs यार. Simicas, Robo not doing well. Yeah. Jackson will test their back line. I think Jackson, Nkunku, Palmer, and Neto, I think these guys will test their back line as well. But also Chelsea are going to be missing players, right? I think Chelsea are missing I think Kukure is suspended or somebody else is suspended. I think Kukure is suspended. Endo is going to be there. Gomez is going to be there. Yeah, there's going to be plenty. I think it might not be an ideal bench. Like Kwanzaa bhi hoga or Bradley bhi hoga and Simicas bhi hoga.
On paper, I think midfield depth is the biggest concern for Liverpool. बिकॉज कर्टिस के अलावा एंड एंडो के अलावा और कोई मिडिल में आ नहीं पाएगा अनलेस आप मेक शिफ्ट करके जोन्स को आगे कर दो, ग्रावेनबर्च को थोड़ा सा रिस्पाइट देने के लिए. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, they will still have enough मेरे हिसाब से. Yeah, Kukurea suspended and Fofana suspended. Tyler Morton होगा, right? But also, like I was saying, it's also going to be Salah versus Gabby Vega, right? For Liverpool. I think that's a favorable matchup. I think Luis Diaz against any right back is a favorable matchup, man. Luis Diaz is a monster when it comes to relentless attacking. And so will be Jota, यार. Jota भी ऐसा है. देखो मतलब वही देखना पड़ेगा. चेल्सी का मिडफील्ड मेरे हिसाब से इज स्ट्रॉन्गर इफ नॉट इक्विवेलेंट टू लिवरपूल. एंजो, चलो एंजो तो अभी इज नॉट इन अ ग्रेट रन ऑफ फॉर्म, बट काइसेडो इज फैंटास्टिक. एंड अगर लाविया खेलेगा, आई थिंक लाविया विल आल्सो बी गुड. आई थिंक एंड देन पामर बहुत बहुत अच्छा एक्चुअली मिडफील्ड है यार. Reese back before he's taken another red or gets injured. Damn, I am hyped, says Ananya. Pep has a history of falling once after dominating, and again next year he comes with fresh squad and dominate. I think this is the year of Arteta. Maybe Liverpool 20th. Palmer versus Robbo. Yeah, ये भी देखना पड़ेगा. But anyways, let's come back to the original question. ये तो preview में हम कल करेंगे ही Liverpool versus Chelsea में. I personally feel that Liverpool's ceiling this season, especially based on that start and what I have seen from Arne Slot, is at least, I think worst case scenario Liverpool के लिए top 3 होगा. I think Liverpool are firmly at least, even at their worst, the third best team in the league right now. The third on the, yeah, definitely. Enzo has been good, Daksh bhai. I mean, look, I don't watch all Chelsea games. The Chelsea games I have watched, he's been super average, MJ bhai. And जो मैं Chelsea pages को follow कर, तो they themselves haven't been too impressed by Enzo in terms of his off the ball stuff as well. So, okay, let me ask you this before we move on from Liverpool. Hands on heart, without any bias, do you guys think Liverpool can win the league this season? And genuinely, if you think yes, sure. If you think no, it's a bit too early. City will eventually find City ways, or Arsenal will, who have been so close, they will be better. Do you think there is a chance of Liverpool winning the league? And if yes, why? Oh, fine. I mean, आपकी मर्जी है. बताना है तो नहीं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं. XYZ edit says yes. Renisu says no. Sparsh says no. Jose Mourinho says no. Jose Mourinho की बात तो हम नहीं मान सकते, मतलब निकाल सकते. No as a Liverpool fan, says Shalin bhai. Is it Shalin or Shalin? Because Nalin होता है, but अगर किसी का नाम सलीम हो, पता नहीं यार. Aryan says yes. Rupinder says no. David says no. Pratyay says no. Arnold says no. Barshad said yes. Deepak says no. Rehan says yes. Curtis Jones season. Yeah, Curtis Jones is a baller. Sometimes he makes his brain dead decisions. Slot ने अभी तक टफ रन ऑफ फिक्सर्स फेस नहीं किए हैं, और जब इंजरीज इन बिग गेम सर पे होंगे तो देखना पड़ेगा स्लॉट क्या कर सकता है. उसी पे डिपेंड करेगा पीएल सीजन फॉर लिवरपूल. मेरे को तो क्या लगता है, जब स्लॉट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक मिलान इज अ गुड टीम, एंड फेयर इनफ, दे आर नॉट द बेस्ट टीम इन इटली एनीवे अभी. बट आई थिंक द इजी तरीके से, जिस इजी तरीके से उन्होंने मिलान को पीट दिया था ना, इट गिव्स मी सम, मेरे को थोड़ा सा लगता है कि लिवरपूल एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है. एक हो सकती है सरप्राइज पैकेज. थैंक यू सो मच राइटिंग अबाउट लुक्यूमी. Feels very good when you saw a player from his youth making a jump into Europe. People acknowledge him even when he's not talked a lot about. Lukumi का यार ये अच्छी बात है शिवम. I think from what I read about Lukumi was when Calafiori was linked with Arsenal. And I was looking at Bologna centre backs, and apparently Lukumi is one of the biggest reasons why Calafiori looked as good. So yeah, Lukumi is a top guy, dude. No, I do not want it, but they have possibilities. बाद में fatigue आएगा. Yeah, it's a long season, that's for sure. Very tough, very long season, as Ayushi says. No, it's early. We can't say until we face Man City. All right, fair enough. I think I will say this. Sid, thank you so much for being a member. Yeah, love you so much, brother. You have joined, I'm guessing, Youth Academy as well. Yeah, you have joined live chat.
You have joined Youth Academy as well. So I'll update the Discord link. 3 new members, hopefully. Welcome back. Welcome back, Sid. Milan isn't the best right now. Italian clubs are uh, way more back than the Prem clubs. Milan is a dead team. Okay. There is absolutely no respect for Milan. Bhai. Ankit bhai ko mat bolna na. He'll feel bad. Chalo. So yeah. Um, for me, Liverpool can be the surprise package. Will they win the league? It's tough to see. But man, it would be, I'll be honest, if Arsenal don't recover to their form of last season or the last season, and if City suffer in the absence of Rodri, मेरे हिसाब से, um, yeah, it could be, it could be. We'll talk about Chelsea as well. We're going table by table. Table के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है? All right, so that is Liverpool done. Any other last things for Liverpool? Any questions you guys might have for Liverpool before we move on to the team in second? तो आप उनको भेज दीजिए. Then otherwise we will move to Manchester City. Do you want to sell Martinelli? No, I do not. Never wanted to sell him यार. But मैं इसको Martinelli के लिए मैं ये कहता था कि it's a big chance for him to show if he belongs or not. And I think recover अच्छा कर रहा है. If everyone's fit, starting 11 for Arsenal. यार अभी हम खेल रहे थे ना, पार्टे राइस ओडेगार्ड, अभी तक मेरिनो को हमने उतना देखा नहीं है. लेफ्ट पे टिम्बर, राइट पे वाइट, दोनों सेंटर बैक्स राया, राइस, पार्टे, ओडेगार्ड, साका, मार्टिनेली, हैवर्ट्स. That's our best lineup मेरे हिसाब से. If Merino comes back and if Merino joins in the team and he is absolutely insane, then पार्टे की जगह Merino. But राइस के बिना आप नहीं खेल सकते. How will Slot manage Gravenberch? Surely he cannot start him all game. मेरे हिसाब से his solution will be to move McAllister in the deep role, because I think McAllister's distribution is also fairly good. He might not be as athletic as Gravenberch, वो लंबी strides करके ये सब वो सब. But I guess a makeshift solution will be to put McAllister in there and then Curtis को थोड़ा सा advanced 8 की तरह खिलाओ. Good evening, Maximilian. How are you? Some thought about Tuchel. In the end, we'll do it. Trust me, chat. We are here for a long stream. सारी चीजों पे बात हो जाएगी, ठीक है? चलो हम 14 तक कल आते हैं. मतलब हम हर टेबल वाइज नहीं जाएंगे. Like Fulham को we'll skip a bit. We'll straight away go to United after some time. But yeah, so this is my take on how Gravenberch को आप manage कर सकते हो in terms of time. Because if you think about it, worst case scenario, let's say, God forbid ऐसा कभी नहीं हो, but let's say Gravenberch goes down injured, you will have to find a solution. I think my solution would be to, I don't know if it's an ideal solution, but I don't think they will use Endo in that sense. Unless there is a master plan to use Gomez as a 6, I think McAllister is the guy who goes back to number 6. And they play sort of like a 4-2-3-1, but one of the double pivots goes thoda sa aage. And McAllister would be one of those double pivots who stays piche. So I don't know, brother. I don't know. La Liga की भी बात होगी. Again, like I said, it's not a 1 hour stream जिसमें हमें rush करना पड़ेगा. We will talk about La Liga also. We'll try and give La Liga also the right breathing space it requires. Okay? All right. But since I am a Prem fan, तो हम बात कर सकते हैं. अच्छा, जाने दो अब लिवरपूल को. Manchester City sitting pretty in second. 17 points, 9 GD, 8 गोल खाए मैन सिटी ने अभी तक इस लीग में. डैम. एंड अगर अडामा ट्राओरे को शूट करना आता तो ये मेरे हिसाब से 8 गोल की जगह 10 गोल तो हो ही सकते थे. मजाक भी नहीं कर रहा मैं. We are in for a good time and also a long time. सही बोला राध्या ने. Always love your content. Thank you, Ronak bhai. We'll take a break in the middle sometime because I would need water and I want to keep the energy a bit high as well. But Manchester City की बात करते हैं, who are sitting in second on 7 games played, 9 GD के साथ 17 points हैं उनके. And they've had, I would say, a mixed bag of fixtures. If you see, who have they played in the Prem? They've played Newcastle, who they had a draw, and to be honest, it was a game that City should have won. वो Gordon को pen मिल गई थी. They've beaten City in the Chelsea in the opening fixture. 2-0 हराया था. They beat Ipswich, who was an easy one. West Ham, no bother. Brentford के against an early goal खा लिए थे, but then they came back and beat Brentford. They drew with Arsenal, which, to be honest, I'm not even joking. They should, like, if City were City, they would have won that game, but they didn't win that game because their defense was super solid. EFL Cup तो चलो छोड़ो. उसके बाद, yeah, Newcastle 3-2 to Fulham. This game, man, this game was something City could have lost very easily. I'm not even joking. Look at that.
2.6, conceding 11 shots with 5 big chances, man. जिसमें से 2 गोल मारे फुलम ने. Look at the shots that City took inside the box and look at the shots that Fulham took inside the box, man. It's absolutely crazy how Fulham did not get anything from that game. Anything from that game. 2.5 का open play XG था यार Fulham का. That's crazy, dude. Crazy. But this is football, man. Sometimes you just have to grind out results. You lose games which you should not be, which you should be winning, and then you win games you should be losing. But that's how basically I think football is, right? Um, Liverpool versus Chelsea. We'll talk about it. Adama Traore, biggest nightmare. I think एक चीज मैं जो देख रहा हूँ सिटी के साथ, and I don't think it's necessarily linked to Rodri, although Rodri being there would have helped. But City fans in general, tell me this: do you think there is a physical decline in terms of अगर Manchester City की profile देखो? For example, like Kevin De Bruyne, one of the best midfielders in the league, in the world, not even in the league. He pulls up injured more often than not. And then I think Erling Haaland is fit and fine, but then Kyle Walker is not the same guy. John Stones, as technical and as good he is, you cannot rely him for an entire season. But Ruben Diaz is good in that sense. Rico Lewis looks like he's coming up a lot more. Bernardo Silva looks like he's coming in a lot more. Grealish, he has his very limited uses, but he is useful. Doku and Savio are being great. Gundogan physically does not look as मतलब जब Gundogan sign हुआ था, even I was of the opinion that this is super smart signing. Maybe Gundogan turns it around. He's bloody Gundogan after all. But do you think there is a physical hit on Manchester City? कि like वो physically उतने वो strong नहीं लग रहे. मैं ये नहीं कह रहा मुस्टंडे types वगैरह, but a tad slower, or maybe not as technical, or maybe not as ruthless and stuff like that. Do you guys think so? I love how our fan base are not taking takes and rage bait seriously. Well, I think it's a good thing that सब होनी चाहिए. I'm a City fan and I have doubt in City's defense. Fulham के against they should have lost. I agree, Shreyan. Vada Pav Cup is Vada Pav Cup. India all out for 46. Congratulations to Team India. That game pure defense versus attack था. Adama Traore. Thanks to Traore भैया. नहीं कर रहा अभी तक दोस्त. City's defense need to sort out problems of leaking goals. It's like they start the game with 1-0 down. That's true. And some of the goals they concede is also super shoddy. Yeah. Lazio में दो Arsenal players हैं. Nuno Tavares and I think who is it? Who is the other one? I think Nuno Tavares is there. I forget the other one who's there, brother. But there hasn't been a downgrade from the treble season. Of course, yes. City has an aging squad. As a Spurs fan, I expect from this club. Pace in defense and midfield is a problem. We are vulnerable at our own set pieces. WTF. That is true, actually. I think अगर अगर अभी इस पॉइंट पे लिवरपूल वर्सेस सिटी होता और अगर एक सिटी का सेट पीस होता ना, दे वुड बी सुपर वल्नरेबल. एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग. आई थिंक if right now there was a Liverpool versus Man City at Anfield right now, I think Liverpool would be very good favorites because Liverpool are a super transitional threat. Yeah, they're super pacey still, with Soboslai running, with Diaz running, with Salah running. Nunes भी भाग लेता है. Jota भी. They're top guys in that sense. Yeah. Our squad average age is increasing. वो तो साल भर साल होती है. वॉकर का तो रिप्लेसमेंट मिल गया इन टर्म्स ऑफ आई एम गेसिंग रिको लुइस आप बोल रहे होगे. वी नीड टू साइन केडीबी रिप्लेसमेंट इन द समर. बट ये बात है ना प्रत्यय, इस सीजन का क्या मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस सीजन? आके भी तो नहीं है. दैट्स ट्रू. सिटीज कोर ग्रुप ऑफ सीनियर प्लेयर्स हैव रन इट्स कोर्स. यार एज फैक्टर तो है. एक साथ इतने लेजेंड्स इनके सेम से एज ग्रुप के थे. दे फाइनली नीड फ्रेश साइनिंग्स. As a Spurs fan, I expect nothing from this team. We'll talk about Spurs, don't worry. I heard a wild rumor that City are getting ready to bring Palmer back to prepare for a life after death with De Bruyne. I'll tell you this, Soumyadeep. मेरे हिसाब से तो ये नहीं होने वाला because Palmer is going to be there at Chelsea till 2031 at least. So nobody is weaning him off that contract मेरे हिसाब से. अभी उसको extension दिया है with better terms ताकि ये exact scenario avoid हो सके. So that won't happen. Maybe yes, Lave would be a great replacement. Again, that contract is brutal till 2029. I think Lave is there at Chelsea. City is not physically strong. Definitely throw Akanji and pick up someone from Serie A who has a good pace in defense. Ricolos. So what is City's problem according to you? Is it off the ball stuff ki physically they can't compete with fast teams or physical teams or strong teams? Or is it the fact that with the absence of Rodri and sometimes De Bruyne and Foden being out of form,
सिटी का वो बॉल जब उनके पास होती भी है, वो कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं है. Or do you think this is just another typical City season where they will start slow? Pep will put in some experiments that will make them vulnerable, जैसे वो फुलम के अगेंस्ट vulnerable थे. And by the time December rolls around, City will start again their 5 month winning streak. ये दिसंबर तक एक sort of इनका एक teething period होगा एक नए सिस्टम का. And दिसंबर to लेके मई तक Pep Guardiola will cook something incredible and then City फिर से टाइटल जीत जाएगी. Or do you think this time Daksh bhai, it's a genuine threat to City? Who will be the KDB replacement? People say Wirtz, but I think Wirtz goes to Bayern. I think Liverpool can't win anything such as things with such a thin squad. Guendouzi, yeah, Guendouzi is there. Age factor to hai. Let me skip some chats. Musiala should come to City. 39-year Rooney will run faster than the years. Jan Kuto bhi hai Walker ka backup. Jan Kuto is to in Dortmund, brother. So Jan Kuto is gone. I don't think Jan Kuto moves so fast. Rebuild delay हो रहा है 2 window से. That's why City looks low. Either Pep needs to accept rebuild or leave for the better of the club, says Ayushi. Okay. Look, I think the pieces are being put in place, Ayushi, मेरे हिसाब से, to prepare for a life after Pep. I think you've got the sporting DOF, and I think Amorim को भी choose कर लोगे. And I think a DOF and Amorim together, मेरे हिसाब से, would be a good duo. We may sign Zubimendi in January. Okay, Barella A didn't get the stream noti. What up? Arey, you just missed the Liverpool discussion, yeah, Ayush bhai. You just missed the Liverpool discussion. We're just talking about what are the expectations now after 7-8 games. Have they changed? What do we think, etc., etc. But we have a long stream. You can always contribute here. City will recall Perone from loan. Perone can play the DM role. Perone can also play the right back role. But the thing is this: if you recall Perone, then that probably means Gundogan doesn't get as much. Look, I don't think City की problem is the squad is thin. मेरे हिसाब से it's a physical. Words won't go to a direct rival. You will be surprised. You will be surprised. Words coming to Bayern, I think it will happen. I think this will be there. Thanks for subscribing, Jagveer. Claudio Echeverry Jan में आ जाएगा Man City में. So like I said, what do you guys think is the biggest issue at City? Is it a lack of physicality in terms of running, in terms of physically competing, stature वगैरह जो हम कहते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हो aging squad, or do you think there is a lack of technical quality with sometimes De Bruyne being injured and Rodri gone for the season and Foden being out of form? I'll tell you this: whenever De Bruyne is fit and De Bruyne is available for City, their chances of winning a game double. I'm not even joking. Because if you see the relationship between Haaland and Foden, and you see the relationship between Haaland and De Bruyne, it's a very different relationship, boys and girls. Because I think De Bruyne maximizes Haaland, and it's more of like a 80% to Haaland and 20% to De Bruyne. Like De Bruyne ka pura role is to be the major assister to Erling Haaland. Erling Haaland will just run, De Bruyne will find him. And I think with Foden, I think Foden tries to get as much out of Haaland as Haaland tries to get as much out of Foden. And I think sometimes that is detrimental because they both want to score goals. They're top sort of guys. क्या हाल चाल अमित, आप बताइए कैसे है? Is a left-footed midfielder. He can play in the double pivot or a CM. He cannot play as a fullback. Wasn't Perone, or am I thinking of Sergio Gomez? I think मैं Gomez के बारे में सोच रहा था. So I'm so sorry. Yeah, Perone is a midfielder primarily. Was I thinking about Sergio Gomez? I think मैं Sergio Gomez के बारे में सोच के confuse हो गया था. Because Sergio Gomez could play fullback as well as midfielder. थोड़ी physical presence कम हो गई, clearly दिखता है if you compare it with Arsenal. I think they will go for Zubi. I think if City have to sign a top guy in the January window to push for the title, I think the ideal candidate is Bruno Guimaraes, मेरे हिसाब से. Because Prem proven है, फिजिकल भी है, 6 भी खेल सकता है, 8 भी खेल सकता है, लीडर टाइप भी है. बट उसको न्यूकासल से निकालना कितना आसान होगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. अगर जनवरी तक, क्योंकि हमने पोस्ट लिवरपूल सागा हमने जूबी मेंडी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं सुना है, कुछ एक्सटेंशन हुआ या फिर रिलीज क्लॉज चेंज हो गया है, कुछ ऐसा हो. अगर 65 मिलियन में जूबी मेंडी आ जाता है, आई थिंक सिटी विल पे दैट, बिकॉज ब्रूनो गिमार्श इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 80 to 100. स्पेशली अगर न्यूकासल अगर 5th 4th के आसपास हवर कर रही है एंड एक यूरोपा से लेके
चैंपियंस लीग स्पॉट इज अवेलेबल फॉर न्यूकासल यूनाइटेड. बहुत मुश्किल होगा ब्रूनो गिमारिश को निकालने के लिए. Savio Doku, Bob need to contribute if City wants to win. Abhi threat and creativity is all Haaland, KDB, Foden. I agree. Even though our aging have been hammered through the years, we still have Echeverry, Doku, Foden, Savio, who are great pieces. Past two windows, they didn't do good business. Got an aged Kundogan, and we still couldn't find Rodri backup. Lost Alvarez and couldn't find a backup striker as well. Good point about Al. Do you think, as a City fan, do you guys miss Alvarez? Do you guys think जब De Bruyne नहीं होता काश Alvarez खेल रहा होता वहां पे? नहीं किया दोस्त, बिल्कुल नहीं किया अभी तक. I like that sort of Man City will go. Joel Linton तो नहीं. Foden is a creator for himself, create space and shoot. De Bruyne completely different. Exactly. Oscar Bob will come in and sign will new player in typical start as usual. We can judge City in January how they go. I also feel so, Jagveer. I mostly think this is a sort of a management period for City जहाँ पे उनको बस results grind करने जैसे उन्होंने फुलम के अगेंस्ट किए थे. And like I said, जब De Bruyne और Haaland होंगे 80% of the games, 90% of the games they will win. Because like I said, sometimes I feel देखो अगर De Bruyne इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी नहीं आता है, which I think he will come back. But the more Fulham like results City have, the more belief other teams have. अभी मुझे क्या लगता है, a lot of teams lose to City before the ball is kicked. एक psychological fear हो जाता है सिटी का कि देखो ये तो 6-7 गोल मार देंगे हमारे अगेंस्ट, तो let's just play super defensive or in a way which we don't usually play. Fulham played the way they played and they almost got a result against Man City. But with De Bruyne coming back, I think by Jan they win 80% of the games. They've already played Arsenal, they've already played Chelsea. They have to play United, who I right now I think are struggling and won't be a big threat. Villa, who I think they will beat super easily. Liverpool, मेरे हिसाब से, and Spurs, मेरे हिसाब से, are tough games for Man City. Because why are Liverpool a tough game? Because I think Liverpool stick to their principles no matter what. And I think Ange is the radical version of somebody who sticks to his principles. तो उधर वो psychological feeling of defeat तो उन दोनों games में तो नहीं आने वाली, because Ange doesn't take that sort of shit. Now, of course, if City are better than Spurs on that day, they'll beat them easily. And same with मेरे हिसाब से लिवरपूल. दे वोंट बीट विला एट विला पार्क. यार मैं एक बात बताऊं रेनिसु, मुझे क्यों लगता है विला पार्क पे हरा देंगे. देखो अगर लास्ट सीजन याद हो, before we played Aston Villa, City also played Aston Villa. Not the two times Villa beat both us and City. But in the second part of the season, where Emery played a new formation out of nowhere only for City. Rested all his players, put up a defensive lineup, and played a completely new formation against City, which I haven't seen Emery do. Like he went into full, I will adapt to the opposition mode. And वो पिट गए. I think वो 2 या 3-0 हारे थे against City. तो sometimes I think Emery has a tendency to overthink about it. But let's see उसका क्या होता है. Savio को run of games मिले एक बार तो creativity बहुत देगा. He is a beast and yeah, I agree with the Gimaresh take. Yeah. 4-1 हार गए थे. Yeah. Kyle Walker is somehow the culprit. City lack of goals. Kyle Walker, I think, eventually will be converted to a centre back man. पेप है दिसंबर तक टाइम दो, उसने 3-5 फॉर्मेशन खिला दी थी. मैं तो वही कह रहा हूँ. लाइक आई पर्सनली एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस इज अ टिपिकल सिटी सीजन. जसवंत दोस्त, कैप से मत लिखो, बॉट आपका टाइम आउट कर देगा आपको, ठीक है. इस सीजन सिटी को वाली नहीं, ये तो हर सीजन का लगता है मेरे को. तो एवरी सीजन एवरीवन थिंक्स सो. सोच रहा हूँ फ्यूचर में जाके आपको कंग्रेट्स फॉर 1 मिलियन बोला हूँ. बोल दे भाई, बोल दे. Who do you think Arsenal will sign as a striker in the upcoming transfer window? I don't think we sign anybody in January. Maybe we do. We'll see. Unless like some opportunity like Sterling arises where a striker is unneeded at a club, maybe we sign him. But other than that, I don't think so. And if we do it, if we do have to go for absolutely anyone, I'd say Sesko. Amorim, I think, is a top coach. Our main problem is transition. Walker is not the same Walker, and it's frustrating to see him play. Very interesting thing you bring up. Transition in the Premier League. Let me show you something, by the way. A beautiful graph I came across thanks to John McKenzie, who works at The Athletic. Here is a graph representing the number of transitions per league. And you look at the Premier League chart. From 1920 सीजन से लेके अभी तक
Premier League's transition game is almost matching up to Bundesliga. Bundesliga is still the most transitional league in the world. But look at the number of transitions that are happening in the Premier League as well. Getting very close. 5.5 डायरेक्ट अटैक्स पर गेम से ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है, बुंडेसलीगा में एट इट्स पीक प्रोबेबली होते थे ओवर 6. एंड आई थिंक प्रीमियर लीग विल टेक दिस लेवल अप, बिकॉज ये जो सिटी वाला स्लो बिल्डअप वाला जो होता है, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक होता है, सम टीम्स आर डूइंग इट स्टाइलिस्टिकली. साउथहैम्पटन डू द सेम बिल्डअप दैट सिटी डू स्टाइलिस्टिकली, नॉट इफेक्टिवली बट स्टाइलिस्टिकली. ठीक है, बट अगर आप अदरवाइज देखोगे, आर्सेनल हार्डली प्लेस लाइक शॉट एनी मोर. वो लंबी लंबी किक्स मारती हैं. लिवरपूल को अगर डायरेक्ट अटैक का मौका दोगे, वो डायरेक्ट अटैक करेंगे. एंजो मरेस का पूरे साल लेस्टर के साथ लास्ट सीजन उसने स्लो बिल्डअप किया था. अभी उसको रियलाइज हो गया उसके पास हाथ में कितने ज्यादा डायमंड्स है, वो भी ट्रांजिशनल हो गया. एंड मैं वही कह रहा हूं, अगर सिटी की सबसे बड़ी थ्रेट इज ट्रांजिशंस ना, जैसे ध्येय कह रहे हैं, if City's biggest weakness is transitions and the Premier League is slowly moving towards direct attacks, I don't know if it will end up being a typical City season or not. Look, City's biggest answer to stopping transitional threats was Rodri, which means if they want to stop transitional threats, and Pep का defense जो होता है बॉल के साथ डिफेंड करो. आर्सेनल डिफेंस विदाउट द बॉल. आर्सेनल प्लेयर्स पीछे बिठा लेती है, कॉम्पैक्ट डिफेंसिव लाइन सेटअप कर लेती है और फिर उधर से वापस अपना अटैक बिल्डअप करती है. पेप का डिफेंस इज बॉल अपने पास जितनी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा हमारे डेंजर से दूर रहेगा, क्योंकि यू कीप द बॉल, ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा मैन, यू विल नेवर बी अंडर थ्रेट. बट अब टीम्स क्या करती है, बॉल जीतने के बाद वो एक डायरेक्ट थ्रेट निकाल देते हैं, किसी ना किसी तरह से एक डायरेक्ट थ्रेट निकल जाता है. सो या दैट्स व्हाट आई फील. अगर लोगों को लग रहा है कि एरियल डुअल्स, ट्रांजिशंस, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, देन सिटी का हो सकता है. बट कमिंग बैक टू द थीम ऑफ द स्ट्रीम, अलग ही levels. Oh, 100%. It's still, if you guys feel that City are still not favorites for the title, I have a bridge to sell you, because I still think City is the best team in the world, man. On their day, City can play a moments game. On their day, City can play a sustained attack game. City can play any game, bhai. And that I think is one of the best teams. So, on this point, um, what is this ED in the Serie A graph? Yeah, Serie A का तो transition game बहुत ही नीचे जा रहा है. It's got the worst transitions. La Liga is fine. Premier League is increasing and Bundesliga is increasing. Anyways, what do you guys think should be City's expectations from this point in the season? Second है रॉड्री, लेकिन सीजन के लिए चला गया है. डेब्रोइना समटाइम्स इंजर्ड रहता है. आप लोगों ने सब पिकअप कर लिया, फिजिकली हम कम हैं. जनवरी में आप लोग री एनफोर्स कर सकते हो. बट या, if City is within 5 points of the top spot by December, they will win the league, says Ayushi. Defensive league for a reason. So Musiala will leave. Nah. He wants to play with Musiala Pokyard. That's the thing. Rodri was key for them because he used to intercept the ball in the opponent half itself. He has a picture of the pitch mapped in his head. True. City are not favorites, says Puneet. All right. Brentford is the prime example of transitional effective teams. And you know what's the craziest part, Taran? Manchester United has all the weapons to be the most dangerous transition team in the world, but they just are not. It's crazy to think. एक transitional league में जहाँ पे एरिक टेन हाग खुद कहते we want to be the best transition team in the world. He's just not able to get United to play transition football. It's crazy. Arsenal will win the league, just wait and watch. City will win it, it's the same script. Do you think City is better than Madrid? With all the injuries right now, look, if there is a full 11v11 squad right now, I think Madrid's attack can hurt City, but in the overall game, I think City will still win. Second, we draw 2 games with Rodri, and without him, we won all games. सही बोला आपने, सही बोला. चेंज वॉज नीडेड. थैंक यू. सौम्यदीप को थैंक करिए, सौम्यदीप ने बनाया है ये बैकग्राउंड. थैंक यू सो मच. अगर सिटी एजे ले आती है तो फिर जीत सकती है इस साल वो एल क्लासिको. सब बात करेंगे, एल क्लासिको की भी बात करेंगे. ऑलराइट, सो I personally think City are still favorites. The worst they can, I think the worst City will end up in the league, if let's say the season does not go according to them, is second. I don't think City ever in any scenario fall below second.
सिटी सेकंड से नीचे गिरेगी नहीं, मेरे को तो ये लगता है. I still think they are the favorites to win the league. The question is, can they win something else with the league? Arsenal are favorites, you feel, says Ayush? All right. United will win the league, says Hashim. ये होना चाहिए भाई. Okay. Defensively, City are susceptible. I think that's a temporary thing. I think January may they get people who will shore them up defensively. They have money to spend, let's be honest. They have money to spend. And they will spend money. All right. Give me 30 seconds. मैं पानी की बॉटल लेके आता हूँ. मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है. I'll be back in 30 seconds and then we move on to Arsenal. Then we move on to Arsenal. All right, we're back. If not first, then what position can Liverpool finish best? I think मैंने तो बोला लिवरपूल का एब्सोल्यूट फ्लोर विल बी थर्ड. एब्सोल्यूट फ्लोर मतलब जो आप लोग सारे इश्यूज कह रहे थे लिवरपूल के, इंजरीज, थिन स्क्वाड, फटीग, जो भी आप लोग कह रहे थे, आई थिंक एब्सोल्यूट वर्स्ट लिवरपूल फिनिश थर्ड. Jaswant says Oscar Boob is the next wonder kid and he is better than Savino. He's the next big thing. Better than Foden, Saka, Palmer, and he is outshadowed by Foden in City. You remember me after 4 years. Thanks, Jaswant. Thumbnail में बदमोशी कर रहे हो. This is what thumbnails are for. बदमोशी. Just want to show his pause graphic. Nah. We've had this graphic for a long time. Anyway, let's move to the team who is currently in third, which is Arsenal. Chat, Arsenal ka. The thing with Arsenal is right now, it's very difficult to say what is Arsenal right now because मैंने एथलेटिक के काफ़ी पॉडकास्ट सुने हैं, आर्सेनल के काफ़ी पॉडकास्ट सुने हैं, राइवल्स के काफ़ी पॉडकास्ट सुने हैं अबाउट आर्सेनल. Everyone has a very different idea of what Arsenal is this season. Simply because every game has this. Every game मेरे हिसाब से has this sort of asterisk in there, you know, कि like ब्राइटन के साथ पॉइंट्स ड्रॉप करे, ओ बट वहाँ पे एक्चुअली रेड कार्ड था. सिटी के साथ यू वर अंडर थ्रेट बहुत, लाइक 60 मिनट्स के लिए यू शुड हैव लॉस्ट दैट गेम, सिटी शुड हैव वन दैट गेम, बट ड्रॉ कर लिया, यू वर सेकंड्स अवे फ्रॉम गेटिंग 3 पॉइंट्स. ओ बट देयर वाज अनदर रेड कार्ड देयर. And I think then there are caveats of like Spurs ke against, on stats Spurs should have won that game but you ended up winning that game off a set piece. Otherwise Spurs वो game निकाल लेती. And all those points are valid by the way. But उसमें फिर वो कैवियट आ जा, अच्छा ओडेगार्ड के बिना तो हमें ऐसे ही खेलना पड़ेगा, हमें इसके लिए ऐसे ही खेलना पड़ेगा. केमिक एंड वॉर्टन, आई डोंट थिंक केमिक मूव्स यार आयुष भाई. For me, Arsenal are a very difficult team to read at this point of season. What is Arsenal is something I'm thinking of. Maybe उस पे एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी. But there are so many caveats to Arsenal in terms of injured players, in terms of an injured backline, their captain being missed, a different style of play which is more defensively compact, some red cards being there. Arsenal have played approximately 100 minutes with 10 players. 100 minutes is a lot in the 7 games, मेरे हिसाब से. But then also, you see some of the fixtures they've had: Villa away, Spurs away, City away. Then 2 relegation teams के साथ आपने गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया था. Wolves, Brighton, who are like, Wolves तो बहुत ख़राब है but Brighton काफ़ी अच्छी है. It's a very big contradiction to see what Arsenal is right now. 15 गोल मारे हैं, 6 गोल खाए हैं, काफ़ी सारे उन्होंने सेट प्ले से बनाए हैं. बट आर्सेनल के सेट पीसेज आर, लग रहा था एक सीजन पहले लग रहा था कि ये कैसे सस्टेनेबल रहेगा, इतने सेट पीस से गोल कैसे मार पाओगे. 42% of Arsenal's goal last season came from set pieces or something like that. Some very weird statistic, right? And that is an absurd number if you think about it. But you're getting those results and those set pieces are still working. You know Gabriel ही मारेगा, Gabriel का भी मतलब काइल वॉकर ऐसी उंगलियां करता रहता है और गैब्रियल साइड से भाग के गोल मार देता है. ठीक है, स्पर्स के अगेंस्ट द गेम प्लान वाज सो ऑब्वियस. Against Spurs, the game plan was so obvious with Rice and Odegaard missing. You knew Arsenal will only play for set pieces and Arsenal will only play for the counter. यही दो चीजें थी.
and it still works. And that's the very weird part. Arsenal's threat in the absence of Odegaard is very obvious. It will either be a cross to Havertz, or a Saka cut inside, or a set piece goal. And these things still work for some reason. And I don't know what. ऐसा भी नहीं है जो हम कहते हैं लिवरपूल वाले कैवियट्स का भी लगा देते हैं कि आर्सेनल ने अभी तक सिर्फ इजी टीम्स फेस करी, हमने डिफिकल्ट टीम्स भी फेस करी हैं। फिर हो जाता है कि आर्सेनल ऐसी टीम है जो जो सिर्फ डिफेंसिव खेलती है, बट देन अगेंस्ट लेस्टर यू क्रिएटेड सो मच, एंड साउथहैम्पटन के अगेंस्ट यू केम सो मच। इट्स अ वेरी वियर्ड टीम आर्सेनल टू जज राइट नाउ। एट वर्स्ट चैट, एट वर्स्ट ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई इंजरी फेस नहीं करी है, बिकॉज वो वाला कैवियट भी नहीं लगता कि देखो, जो भी हमने अभी तक कैवियट्स लगाए हैं, लिवरपूल का कि थिन स्क्वाड है, लिवरपूल का दैट द गेम्स हैव बीन इजी, या इंजरीज अभी तक नहीं हुई हैं, या सिटी का कि फिजिकली डिक्लाइन कर रहा है स्क्वाड, या एज वाला है, ऑल दोस कैवियट्स डोंट अप्लाई टू आर्सेनल, बिकॉज आर्सेनल हैव फेस्ड इंजरीज, आर्सेनल हैव फेस्ड टफर टीम्स, आर्सेनल don't have a physical decline, and Arsenal have managed through injuries. That being said, chat, what do you think is? I know a lot of people consider Arsenal to win the league. I still will hold on to that judgment, not because I'm an Arsenal fan. Predictable to bahut hai Arsenal, but sheer physical presence is an advantage. I don't think we're predictable. No, that's what I'm saying, Ajay. Like, I think you can't. With every team, you can probably list down how they're going to play in the majority of the game. With Arsenal, I don't think you can. एंड दैट डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द पर्सनल। लाइक ऐसा नहीं होगा कि अगर ये ग्रुप खेलेगा तो आर्सेनल ऐसी खेलेगी, और वो ग्रुप खेलेगा तो आर्सेनल ऐसी खेलेगी। आर्सेनल मेरे हिसाब से, जैसे वो लूटन के मैनेजर ने लास्ट सीजन बोला था, आर्सेनल प्ले डिफरेंट वेज इन द सेम गेम। आई थिंक इट्स वेरी लेजिटिमेट, बिकॉज आई डोंट थिंक, मतलब क्या है, हियर इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्सेनल इज। आई थिंक 2 साल पहले आर्सेनल वाज फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल, प्रॉपर प्राइम फुटबॉल, पेप ग्वार्डियोला स्टाइल फुटबॉल हम खेलेंगे। ठीक है, कि आप बॉल रखोगे, आप बॉल के साथ मूव करोगे, और बॉल के साथ अटैक करोगे, बहुत सारे गोल मारोगे। और हमने ये करा था, एंड में हम शॉर्ट पड़ गए थे। लास्ट सीजन हमने उसको थोड़ा रेन इन किया, हमने थोड़ी डिफेंसिवली सॉलिडिटी लाई, उसमें भी हो गया, बट स्टिल इट डिड नॉट वर्क। अटैक वाज स्टिल द मेन कोर्स ऑफ एक्शन। आई थिंक इस सीजन आर्सेनल की ये चीज है, हमने गोल मार दिया, अब तुम मार के दिखाओ। एंड आई थिंक हमने पीएसजी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टफ, कि we scored one goal with Havertz, and then we scored another very weird goal with Saka. Now you try and break us down. And if you don't try and break us down, then we're going to walk away with the lead, walk away with the win. And in the middle, we're going to try and score another one or two more. And I think that is just one of the ways that we have decided to go. अगर आप statistically, अगर आप ये वाली गेम देखो, Arsenal versus Spurs, okay? Where is it? Fixtures. Let's take Arsenal versus Spurs to demonstrate what I'm trying to say. 1-0 to the Arsenal. If you look at the stats, 64% possession for Spurs, 0.7 less XG than us, but 15 shot, 5 on target, but no big chances created for Spurs. They took shots within the box also, but a lot of them were blocked. If you look at statistically this game, if this game is played 9 times out of 10, maybe Spurs win those games. ठीक है, 8 times out of 10, 9 times out of 10 if Spurs play those games, maybe Spurs win those games. ठीक है, I think Arteta's entire philosophy this season has been, we don't care if this game is going to be played 9 times out of 10 and Spurs will win. We just have to win that one time and then just move on. I think we've gone hyper pragmatic in the sense, you just have to win this one game and that is all that matters. Screw stats in terms of आपका field tilt ऐसा है, screw stats in terms of आपका expected goals ऐसा और आपका expected goals against ऐसा है। आपको सिर्फ ये गेम ही जीतनी है, because if you remember last season, one of Arteta's biggest statements जो हर गेम के बाद देता था, we deserve to win, we played in a way which we deserved all 3 points, but we weren't too as effective in the 2 boxes, or whatever he used to say. I think the entire strategy has changed to the point where the notion is, fuck winning the games 9 times out of 10 or 8 times out of 10, just win it this once. So I personally feel that we have gone away from the strategy from the last 2 seasons. I think at worst,
I think at worst, Arsenal finish third this season, just like Liverpool. यही सिमियोने 10 साल से कर रहा है एंड ही इज लेबल्ड एज डार्क आर्ट्स मास्टर एंड आई थिंक अर्टेटा को भी डार्क आर्ट्स मास्टर इसलिए बोल दिया गया है बिकॉज ही जस्ट वांट्स टू विन टुडे. अभी फर्क नहीं पड़ता कि आपका फील्ड टिल्ट इतना था और आपका एक्सजी ट्रिपल द टीम था एंड एवरीथिंग बिकॉज we have lost games like this against Spurs in the past. We've lost games like this against Newcastle in the past. We've lost games like this against Villa last season. I think at worst Arsenal finish third if Liverpool have a fantastic season and City are City. But I will actually be a little braver and I will say Arsenal should not finish below top 2. मुझे नहीं लगता आर्सेनल टॉप 2 से नीचे फिनिश करेगी इस गेम में, इस सीजन में. Whether it's Liverpool 1 or City 1, I think Arsenal are going to be easily the second best team in the league, at least the second best team in the league. I'm here since you stopped doing Arsenal watching. Can you recommend same channels for that? This is my first season watching photos. I really use some insights. I was thinking of doing some watch alongs, brother. But if you want to do watch alongs, I think Curtis Shaw ke watch alongs are fun, although it gets a bit toxic there. You can watch the watch alongs on AFTV. Otherwise, if you want some fun watch alongs, I think Deluded Gooner is doing some really good watch alongs. So you can do those. This makes Arsenal a serious contender in the UCL. I think maybe because, again, the problem with sort of watching football like this and analyzing football like this, Smith, is we are so used to what is our idea of winning football, right? What is our idea of winning football? Our idea of winning football is keep the ball, create a lot, score a lot. Therefore, that is winning sustainable football that will grant you titles because we've seen Pep Guardiola do this for time on time, right? But thing is this, you cannot win in the league against Pep Guardiola playing Pep Guardiola football because Pep Guardiola is always 2 steps ahead of you. No matter what you do, जो आप सिस्टम इस साल लगाओगे पेप ग्वार्डियोला ने लास्ट सीजन यूज करके फेंक दिया, खत्म. दैट सिस्टम इज डन. 3-3 आर्सेनल ने लास्ट सीजन लगाया था, पेप ने 2 साल पहले लगा के खत्म कर दिया सिस्टम. सो if you can't play Pep Guardiola ball in a Pep Guardiola league, you will have to come up with a different way, is what I feel. And but you in the UCL and in the Premier League, you have to score goals. You have to score goals. You have to defend. I think वही बात आ जाएगी. This season, if Arsenal win the league, will be a good testament to the idea that you can win the league without Pep Guardiola football, just like Jurgen Klopp won once without Pep Guardiola football. It was a different kind of football for sure. And the thing is this, what's similar between Jurgen Klopp winning that season and Arsenal winning, if Arsenal win this season, is the reliance on physicality. The difference is Klopp's physicality was win the ball high, run fast, run relentlessly, and attack relentlessly. Arsenal's physicality is win the ball no matter what. Win the ball no matter what. High, low, whatever. And defensively solid रहना. उसके बाद गोल हम बना ही लेंगे. उसके बाद हमारे पास जैसे किसी ने लिखा था कि फिजिकलिटी टाइप्स मेरे हिसाब से फिजिकली अगर आर्सेनल की शेयर प्रेजेंस ज्यादा है, दे माइट विन मोस्ट ऑफ द गेम्स. दैट्स द थिंग. काउंटर अटैक ही बेस्ट है अगेंस्ट पेप. बट वही तो प्रॉब्लम है, अगर काउंटर अटैक बेस्ट रहता तो पूरा लीग काउंटर अटैक बन जाता. मे बी अब धीरे धीरे हो रहा है. यूसीएल के कर लो ना, वी गेट स्टिक इवन इफ यू विन एनीवेज इन द यूसीएल. हाँ, वो तो उसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते. Arsenal has defended well against difficult wingers and this stops most of the attacks and this is down to the work rate. That is true. I think Arsenal के जितने forwards work rate दिखाते हैं वो और किसी टीम में नहीं दिखाते. Apart from Real, maybe City, nobody is a favorite in the UCL. I think Real and City are the top 2, maybe top 3. Again, I still think in our view of football, and I think in football in general, the team that scores the most will win. It's a very, of course, a very obvious statement, but in the sense that a team, जिस team का prerogative is to score more goals, वो ही top honors जीतेगी. डिफेंस में हमने ज्यादातर देखा नहीं है. चलो ठीक है, लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग में फुल मोमेंट्स आ जाते हैं. But yeah, I personally feel Arsenal's expectations this season, based on these games, has to be winning the league and at worst second. मुझे नहीं लगता Arsenal second से कम आएगी. Second से कम आ गई Arsenal, I'll be very, very disappointed after this start. And look, it can happen. Bournemouth isn't going to be an easy game whatsoever. लोगों को जितना लग रहा है कि Bournemouth आसान होने वाला, उतना आसान नहीं होगा.
They're a solid team. They're not as well placed in the table, but with players like Semenyo वगैरह, they are a good team. Still, we should be winning that game. Just because it's not easy doesn't mean we shouldn't be winning. जब लिवरपूल खेल रही है चेल्सी के साथ, which means one or both of these teams will lose ground. अगर ड्रॉ हो जाता है गेम, आइडियल है. चेल्सी हमारे थोड़ी सी पीठ से नीचे गिर जाती है, ठीक है. लिवरपूल को आप ओवरटेक कर सकते हो अगर हम अपना गेम जीते तो. सो चेल्सी वर्सेस लिवरपूल would be a good game for us, either to catch Liverpool or get Chelsea off our back, or both in some sense. ठीक है. सो ऐसे हफ्तों में आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा. एंड सिटी तो वैसे ही वुल्स के अगेंस्ट खेल रही, हु आर नॉट इन ग्रेट फॉर्म. सो सिटी तो एनीवेज आर गोना कीप क्लाइंबिंग. एंड आई जेन्युइनली फील इफ आर्सेनल हैव टू विन द टाइटल, Arsenal have to be very, 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 very close to City. Like you can't fall behind City. And आप टॉप कोई भी टॉप पे हो, सिटी से अगर आप 4-5 पॉइंट पीछे चले गए जनवरी तक, खत्म सीजन, खत्म 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 खत्म. आर्सेनल का इंजरीज कैन हर्ट देम. दैट इज ट्रू. आई थिंक इंजरीज आर गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट एनिमीज, एंड वी हैव टिल नाउ समहाउ डेल्ट विद देम मेरे हिसाब से. Ben White की injury, we haven't seen Ben White in a long time. Tomiyasu keeps getting injured. We haven't seen him in a long time. सिर्फ सब अपीयरेंस के लिए आया था. Apparently he's injured himself again. Saliba Gabriel, thankfully भाई, touch wood, अभी तक safe हैं. So Saliba Gabriel are fine. Raya is in top form. Rice looks a bit off it, but ठीक है. Partey has been really, really good. Um, Saka is hurt. Odegaard's hurt. Martinelli is hurt. बट फिर भी हम किसी ना किसी तरह चीज़ें चला रहे हैं. सो या वी सॉर्ट ऑफ, मेरे हिसाब से हम अगर ये मैच हम जीत गए तो अपने दोस्त का जीना आराम कर दूंगा मैं. सही है यार. ऑलराइट, आर्सेनल फैंस, हु हैव बीन आर्सेनल्स टॉप 3 परफॉर्मर्स दिस सीजन? टॉप 3 परफॉर्मर्स फॉर आर्सेनल दिस सीजन, हु हैव बीन प्लेइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कह रहा हूं मैं. Arsenal played a bit defensive this season, and they're probably the best in the world at nullifying opposition, but this wasn't their style previously, and it's not a criticism. I think so too. Yeah, you're right, Siddharth. Like I said, I think Arsenal's style a last couple of seasons was to be in a position that you will win this game 9 times out of 10, and you play on the variance that the variance falls on your side 9 times out of 10. But sometimes it doesn't happen. So what you would see is you would have a winning run for like 5 months, just like City. हाँ, January से लेके आप May तक सारी games जीतोगे except one, and that one game was crucial in deciding you not winning the title. ठीक है, विला से हार गए थे हम लोग. And I think this season Arsenal style, Siddharth, is just to win the game no matter what. Red card जीतो, 10 men जीतो, player injured जीतो, बस जीतो. कैसे भी गोल मार दो और बोलो ऑपोजिशन को अब तुम मार के दिखाओ. दैट्स इट. आर्सेनल एंड ओल्ड वॉल एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस में क्या डिफरेंस है यार? आई विल बी ऑनेस्ट, before 3-4 years ago I did not watch Atleti that much, so I can't really say, but Atleti was also defense first मेरे हिसाब से. Top 3, Gabriel, Saka, Havertz. I agree with this. Arteta. Maybe Saka, that's one. I think Saka's been our best player. I think Havertz has been our second best player. The third best player is where there is divergence. Either it's Gabriel or it's Raya. Saka, Havertz, Raya in this order. Yeah. Either it's going to be Saka, Havertz, Raya or Saka, Havertz, Gabriel. कभी कभी तो आप पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज करते हो और अभी बहुत तारीफ करते हो. कुछ समझ नहीं आया. देखो, पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज दिस. ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी क्वेश्चनेबल कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द थिंग्स जिसके उस पर केस है, बट ऑल्सो द गाय वाज नेवर फिट. द गाय वाज नेवर एवर फिट. ये पहला सीजन है जब पार्टे ने आर्सेनल का मैच डे स्क्वाड में 5 बार इंक्लूड हुआ है इस पॉइंट ऑफ द सीजन तक. इससे पहले ही प्लेड 4 games, gone for a month. That's what used to happen with Thomas Partey. So I don't know, like I still don't want Partey to renew, but खेल अच्छा रहा है and I can give him credit for that. I'm not a perennial hater. Raya, Saka, Gabriel, Havertz this season. Gabby, Kai, Raya, or not Saka for you, Ibrahim. I think Saka has to be there. Timber, Kala and Gabriel, all this. You've gone full defensive. Fair enough. Havertz से मैं इतना expect नहीं किया था. He is doing well till now. I agree. Saka, Trossard, Gabriel. I think Trossard is also an underrated shout. इंस्टा आईडी क्या है? इंस्टा आईडी यार मैं प्राइवेट, मतलब मैं फुटबॉल वाला उतना चलाता नहीं हूँ, तो ट्विटर ही ले लो अभी तक. साका, राया, गैबी, राया, माइकल ओलिवर, साका, गैब्रियल, राया, 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 साका, हैवर्ट्स, साका, हैवर्ट्स, गैब्रियल.
बेंच रोल के लिए तो सही है पार्ट है, या बट इट्स हिज लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी शुड नॉट बी रिन्यूइंग इट. Gabriel Saka, Havertz in that order. All right. Yeah, I think for me Saka is number 1. Matlab the guy is assisting, creating big chances. He's doing everything, man. Watch the different knocks latest video and you will see there's this part about Saka he covers and you will see how good he has actually been. Red card Gabriel Raya bhai, red card to hai hi hai. Anyways, before we move on from Arsenal, last question to you guys. What is the best case scenario for Arsenal and the worst case scenario for Arsenal in terms of the league? In terms of the league, what is the thing, best position for Arsenal and the worst for Arsenal? I think I know the answers though. राय शुड बी टॉप 3. अकेले जिताया है मैच वो 3-4. सही बात है यार. सही बात है. फर्स्ट थर्ड आई थिंक फर्स्ट सेकंड यार. आई थिंक फर्स्ट सेकंड. आई थिंक वी आर गुड इनफ टू कीप सेकंड प्लेस. Yeah, I don't think सेकंड से नीचे जाना चाहिए हमें. आई थिंक अगर सिटी का डिक्लाइन हो जाता है टू द, आई डोंट थिंक सिटी विल फॉल थर्ड बाय द वे. बट अगर इन सम सिनेरियो सिटीज डिक्लाइन इज स्टिल थर्ड, वी शुड बी इन प्राइम पोजीशन टू विन द लीग. आई एम सॉरी. एंड अगर सिटी का डिक्लाइन नहीं होता है वो जनवरी में रिकूपरेट कर जाते हैं, वी शुड बी ऑल द वे अलॉन्ग देम भाई. फर्स्ट और थर्ड विद अ प्रॉपर कप. आई थिंक वी शुड विन अ कप फॉर श्योर. आई थिंक we should win a cup for sure. Yeah, कप जीतना जरूरी है इस साल मेरे हिसाब से, बिकॉज यार इतनी अच्छी टीम बनाई है ना. आई रिफ्यूज टू बिलीव. अगर आप कुछ प्रीवियस कप विनर्स देखो ना, आई थिंक वी आर स्लाइटली बेटर देन देम, राइट? वी शुड बी एटलीस्ट कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी बेटर और एटलीस्ट इक्वल. वी आर एटलीस्ट एज गुड एज देम टू विन द कप. एंड आई एम श्योर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉज आ जाते हैं जिसकी वजह से आप हार जाते हो. जैसे आई थिंक लास्ट सीजन कैराबाओ में भी सिटी हार ही गई थी एक पॉइंट पे. किससे हारी थी? न्यूकासल से हारी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग. सो या, समटाइम्स यू कैन लूज, यू नो, बट आई थिंक वी शुड विन अ कप दिस टाइम. League win would let players to stay rather than going to other clubs. Look, here is why I think I don't buy the players will leave for other teams if you don't win. I think in the past you could make this a legitimate argument because Arsenal was not investing and Arsenal was not improving. I think Arsenal right now are super duper improving. It's really up to the players to deliver right now. That's it. Worst I think would be second. All right. कब के लिए लिटिल बिट लकी होना पड़ता है. थैंकफुली अभी तक हम लकी हैं. हमारा लास्ट राउंड कैराबाओ में बोल्टन था और नेक्स्ट राउंड अपकमिंग प्रेस्टन है. सो कप के लिए स्क्वाड नहीं है आपके पास. कितना सागा खेलेगा? आई थिंक द गुड न्यूज इज यार अमित इसमें कि कप में ना इवेंचुअली हम न्वेनेरी और स्टर्लिंग को ज्यादा बड़ा रोल देखते हुए लेते हुए देखेंगे. बिकॉज आई थिंक स्टर्लिंग की अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट आर्सेनल इज फिजिकली ही इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड दैट वी रिक्वायर फ्रॉम आवर विंगर्स. अभी क्या होता है, स्टर्लिंग गिर जाता है और वो गिरा ही रहता है और तब तक दूसरी टीम अटैक करके गोल मार देती है. हमारे में क्या होता है, द सेकंड अ विंगर लूजेस द बॉल एवरीवन इज रनिंग बैक एंड डिफेंडिंग. वो स्टर्लिंग अभी नहीं कर पाता. उसके पास वो फिजिकल कैपेसिटी ही नहीं है. हेसूस के पास वो फिजिकल कैपेसिटी नहीं है. तो जब तक स्टर्लिंग उस लेवल पे नहीं आता हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते. बट इस राउंड के बाद आई थिंक द नेक्स्ट राउंड ऑफ कैराबाओ फिक्सचर्स हैपन इन जैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जैन या दिसंबर एंड में होंगे. So for me, that will be enough time for Sterling to get used to our squad physically. तो तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं उन सिनारियोज में ज्यादा, मेरे हिसाब से. टिपिकल स्टर्लिंग. या लंदन में रहते हो ना, एक काम कर लिएगा, कोहली के घर का लिख देना, लीव बिफोर द क्रिकेट लीव्स. आई डोंट लिव इन लंदन बट आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट. यस, ये सबसे बड़ी सिचुएशन है आर्सेनल के. चलो नेक्स्ट टीम. वी स्टक विद आर्सेनल फॉर अ व्हाइल. And I think I've sort of explained what I think about Arsenal for now. We'll try to make a video about it. Now, I think we will talk about the biggest. All right. Chalo. Chat, tell me one thing. And if you're a Chelsea fan and if you're not a Chelsea fan, answer without bias. Has Chelsea surprised you this season or were you expecting this? एल क्लासिको विल टॉक अबाउट आफ्टर वी डन विद द लीग ब्रदर. अभी हम चेल्सी की बात करेंगे, फिर विला की बात करेंगे, फिर न्यूकासल, फिर स्पर्स एंड देन यूनाइटेड एंड देन विल मूव टू ला लीगा. हेलो प्रिया, हाउ आर यू? Expecting says XYZ edits. Gaurav says yes. Sapien says yes.
surprise, massive surprise, not expected. As a Chelsea fan, it's surprise, absolutely 100%. Yes, you expected this, all right. Or it's a surprise. What are you saying, Harsh? Yes, definitely. No, because how they finished last season. So it's not a surprise for Aksan. No surprises for Morgan. Chelsea fan, and yes, they have surprised me. Yes, but expected a better start than last season. Surprise, 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 surprise. So most of you are surprised, which is, I think, a fair thing. सपने में भी ऐसा खेलेंगे सोचा नहीं था. Surprise, expected, but not this early. All right. Next four games will tell the story whether these seven games were an improvement or new manager bounce. Look, I still feel eventually clubs will start getting used to Chelsea. And so I don't think they will fall off इतना भी ज़्यादा और इतना भी जल्दी जितना हम कर रहे हैं. But I expect a plateau at least at some point of time. Had zero expectation the squad in Maresca. Fair enough. That being said, I think, look, after 2 years of being outside of Europe, well, not Europe per se, but outside of top four, I think Baba articulated, Ankit Bhai articulated, a lot of people articulated that top four should be a must this season. Now, after 7 games, Chelsea fans, what do you think now are your expectations in the best case scenario and the worst case scenario in the league? Because जैसे आप लोग कह रहे हो सरप्राइज तो हो गए थे आप लोग, ठीक है, बट नाउ व्हाट इज द बेस्ट केस सिनारियो एंड द वर्स्ट केस सिनारियो? टकला टकला का गेम ही है इसके बाद अच्छा. बिगेस्ट इशू विद मरेस्का डजंट चेंज स्टार्टिंग लाइन व्हिच इज फ्रस्ट्रेटिंग. आई थिंक गौरव दिस विल बी एन इशू विद चेल्सी रिगार्डलेस, बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक 11 अच्छा खेल रहा है साथ में और केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है तो पूरी सीजन के लिए उसको रखना इंपॉर्टेंट है. बाकी तो इंडिविजुअल क्वालिटी वाले चेंजेस तो आप कप्स में एनीवेज करोगे, बिकॉज कप्स में तो आपको इंडिविजुअल क्वालिटी चाहिए, केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं चाहिए. बेस्ट टॉप थ्री वर्स सिक्स, गुड शाउट. विल टेक दिस अभी. We should finish top four this season. Fourth, and worst case is outside of Europe. You still feel you'll fall outside of Europe, Ajay? I don't think you'll fall outside of Europe. No chance. Best fourth, worst sixth. Nikhil says best fourth. Best is third, worst is sixth or fifth. Top four, we want, like Baba said, I guess they would be third, worst would be fourth. Best top four, worst top four. No excuse, we need European football. You're going to talk about Bayern? I will. I'll talk about Bayern. But it's going to be a long stream then. And if you're there till the end, Siddharth, fair enough, brother. For टीम स्ट्रेंथ तब पता चलेगी जब इंजरीज होंगी. आई थिंक चेल्सी इज वन ऑफ दोस टीम्स जिनको इंजरीज का ज्यादा होगा नहीं, unless injuries are to key players, and God forbid this happens. But if injuries to Palmer happen, or Kukureya maybe, or maybe Caicedo, then we'll have to see, brother. Because I think everything else they can manage. But Palmer's output is insane. I think every other player except maybe Palmer and Caicedo they can replace. I think Kukureya ki jagah Vega is a different proposition. He will be fine. Not as great, but he will be fine. I think Jackson ki jagah Nkunku should be fine. I think Neto on either wings should be fine. उसके बाद मुद्रिक भी है. They have Felix also who can do all those multiple roles. हमने तो ग्यू की बात भी नहीं करी है. इनफैक्ट काइसेडो की जगह लाविया भी ला सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट. सो इंजरीज आर मेरे हिसाब से वेरी लेस इशू फॉर चेल्सी. मे बी केमिस्ट्री कुड बी एन इशू. CB pairing is more importantly only Colville, Tosin and Fofana are not good. Consider the Chuckle brothers. Definitely not expected. Chelsea next 5 games are going to decide their season. Tosin to watch out for. I think Tosin was a good buy. First buy tha unka is season ka, and I was really impressed by it. Now, Harsh says top 3 best case scenario. Genuinely asking, and you can be as biased as you want in this one. Do you think Chelsea wins top 3 or gets top 3? And if they do get top 3, मेरे को तो क्या लग रहा है, चेल्सी गिव मी आर्सेनल के 2 साल पहले वाले वाइब्स. फुल अटैकिंग फ्लो. हाँ, फुल अटैकिंग फ्लो, मस्ती वाले अटैकिंग फ्लो, बहुत गोल, बहुत मजा आता है देखने में. डिफेंसिवली मुझे थोड़े से वो अभी रिजिड लगता है, मतलब ससेप्टेबल. एंड ये ससेप्टेबिलिटी डज नॉट मीन दे कांट बीट लिवरपूल or they can't beat City or they can't beat Arsenal, because Arsenal versus Chelsea is going to be a
Very, very good game. Arsenal versus Liverpool is also going to be a very good game. It's just the other teams जो पीछे बैठ जाती हैं, स्पेशली जो दिसंबर ऑनवर्ड्स पीछे बैठ जाएंगे. मुझे बस चेल्सी का ये लगता है कि वो कहीं ना अनएक्सपेक्टेडली पॉइंट्स ड्रॉप कर देंगे, और मुझे लगता है चाहे गैप छोटा ही होगा, बट आई थिंक थर्ड बेस्ट टीम के लिए वो गैप होगा. लास्ट सीजन, लेट्स सी अगर ये फॉर्टमॉप दिखाता है, नहीं दिखाता. पीएल टेबल 23-24, अगर आप 23-24 टेबल देखोगे, द थर्ड बेस्ट टीम इन द लीग गॉट 82 पॉइंट्स. ओके, 82 points is what the third best team in the league got last season, which was Liverpool. And Liverpool had 24 wins, 10 draws. 10 draws is insane, by the way. 24 wins, 10 draws, 4 losses. अगर आपके लॉसेस सिंगल डिजिट रहेंगे और आपके ड्रॉ सिंगल डिजिट रहेंगे, वो भी लाइक मैक्सिमम 7 ड्रॉस, बाय द वे. आई थिंक चेल्सी डू मेक अ जंप फ्रॉम लास्ट सीजन. लास्ट सीजन चेल्सी के 63 पॉइंट्स थे. इवन इफ चेल्सी मेक अ, लाइक अगर चेल्सी को टॉप 3 आना है, आई थिंक दे हैव टू मेक अ 20 पॉइंट जंप दिस सीजन. 20 point jump is where I am a little bit skeptical of top 3 for Chelsea. And it's no hit to Chelsea, and Chelsea can prove me wrong literally by beating Liverpool and Arsenal. मजाक भी नहीं कर रहा, मजाक भी नहीं कर रहा. It is not beyond the realms of possibility. The Chelsea thrash Liverpool and Chelsea thrash Arsenal. Because एक overwhelming attacking force बहुत important होती है गेम जीतने के लिए. Yeah, for sure, dude. Those are incredible matches, Devij. बस लास्ट सीजन थर्ड टीम टाइटल के लिए जा रही थी. आई डोंट थिंक चेल्सी उस रेस में है. मेन बात यह है कि अभी पहले सीजन वन स्क्वाड ही इंजर्ड था. अब इस सीजन कोई भी इंजर्ड नहीं है एक्सेप्ट फिलिप यॉर्गेंसन. इस सीजन हमें कोई भी ट्रॉफी चाहिए भाई, क्योंकि लास्ट 2 सीजन एक भी ट्रॉफी नहीं आई है. आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग तो इज मोर और लेस गारंटीड फॉर यू गाइस. Should have won one of the games from Forest or Palace. Point wise, we will jump, but top 3 isn't possible. Not 20, it's just 10. How is it 10? I'm talking about last season. मैं कहता हूँ चलो लिवरपूल का एक, लेट्स से यही टेबल रहती है, लेट्स से सिटी वन आर्सेनल सेकंड, एंड मैं कहता हूँ लिवरपूल का 6 पॉइंट डेफिसिट भी आ जाता है ना, 76 आ जाता है. चेल्सी को एक 13 पॉइंट का जंप चाहिए होगा टू मैच लिवरपूल. अब बस वही बात है कि एंड बट वो ये भी बात है कि वो पॉच वाली टीम से, क्योंकि चेल्सी हारी थी 11 गेम्स हारी थी चेल्सी. Chelsea lost less games than Spurs, by the way. That's insane to think about. That Chelsea lost less games than Spurs. That's crazy. Yeah. देखो यार, 20 पॉइंट का जंप मारना मतलब वुड बी एन इनक्रेडिबल सीजन मेरे हिसाब से. मैं कहता हूँ कि लिवरपूल का बिकॉज ऑफ द न्यू मैनेजर 6 to 8 पॉइंट्स का भी ड्रॉप आता है ना. आई डोंट नो चैट. पॉच तो मेक्सिको से भी हार गया. या लिवरपूल इज बेटर देन अस बाय बिग डिस्टेंस इन डिफेंस इफ वी गो फॉर हेड टू हेड थर्ड पोजीशन फॉर थर्ड पॉट. आई थिंक इवन चलो लिवरपूल को छोड़ो, अगर आर्सेनल भी थर्ड तक गिरती है ना, आर्सेनल भी 80 प्लस पॉइंट्स पे होगी मेरे हिसाब से. चेल्सी को एसेंशियली थर्ड आने के लिए 80 प्लस पॉइंट्स चाहिए, विच इज अगेन अ 20-ish पॉइंट्स जंप. 20-ish पॉइंट्स अब चेल्सी निकालेगी और नॉट इज अ डिफरेंस, मतलब वही है. दक्ष भाई, स्क्वाड डेप्थ भी तो है चेल्सी के पास. लिवरपूल पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप सारे कैवियट्स लगा लो लिवरपूल के कि वो थक जाएगी, नया मैनेजर है, इंजरी आ जाएगी, और आप वो सब के बाद भी कहते हो कि लिवरपूल 76 पॉइंट्स पे आ जाती है, ठीक है. बिकॉज लिवरपूल 2 साल पहले, जब आई थिंक 2 साल पहले वॉज वन ऑफ देयर वर्स्ट सीजन इन हिस्ट्री, वो फिर भी 67 पॉइंट्स ले आए थे, ठीक है. और देखो कंसिस्टेंटली अगर आप टेबल देखोगे, रुको, consistently close to 75 points you have to beat to come third. 21-22 में third came
चेल्सी आई थी 75 पॉइंट्स के साथ, ठीक है? 2021 में लिवरपूल केम, चलो 70 पॉइंट्स। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वियर्डेस्ट लीग टेबल्स। ये तो बहुत ही अजीब सा ही लीग था। 1920 में तो लिवरपूल भाग गई थी, उसमें भी थर्ड 66 था। बट इफ यू लुक एट द मोस्ट रीसेंट सीजन्स, इट्स एन 82 पॉइंट सीजन और अ 75 पॉइंट सीजन। सेम बात है, चेल्सी को 70 पॉइंट से ऊपर 75 लाना, टॉप फोर तो इजी बात है। I think top four. Think Chelsea have a very good chance of top four. I think Chelsea have only one competitor for top four. It might not even be Villa. I think it's going to be Spurs, who are going to be Chelsea's competitors for top four. Spurs का भी वही डिपेंड करता है कि Spurs क्या करती है। Spurs अगर हार जीती हुई गेम्स हारने लग जाती जैसे वो ब्राइटन के साथ कर लेगी, तो Spurs का तो कुछ भी भरोसा नहीं है। बट आई थिंक Chelsea should be worst case, absolute worst case for Chelsea, fifth. मुझे नहीं लगता चेल्सी आर वर्स देन द फिफ्थ बेस्ट टीम इन द लीग, नो मैटर व्हाट। ठीक है, एब्सोल्यूट बेस्ट आई थिंक, मतलब हम कह रहे हैं मतलब एब्सोल्यूट डिलाइट सीजन है, देन चेल्सी विल बी थर्ड। बट मोर रियलिस्टिकली आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ विल बी चेल्सीज पोजीशन। आई रियली डोंट सी बोथ स्पर्स और यूनाइटेड कमिंग अबव फिफ्थ। आई डोंट नो मैन, आई थिंक स्टेबिलिटी इन स्पर्स विल बी अ ह्यूज फैक्टर यार लेटर। स्पर्स आई थिंक एक कप कंपटीशन से नहीं, हैव दे लॉस्ट? नो नो नो, दे वन अगेंस्ट कॉवेंट्री, सो they're still in, they're still in. Yeah, I also think so, Shashank. This is for me. I think Spurs को लोग seriously उतना नहीं लेते हैं, but I think Spurs have, by numbers they have the best team in the league. By numbers की बात कर रहा हूँ। I'm not underestimating Villa at all. I'm not underestimating Villa at all. बट मैं क्या कह रहा हूँ, जब विला ने बायर्न के साथ खेला था और उनको हरा दिया था, एंड देन उसके 4-5 दिन बाद दे हैड टू प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड। लुक चैट, मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ आर इन टेरेबल फॉर्म, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव एस्टन विला जैसी टीम उनके अगेंस्ट एक गोल नहीं मार पाई। आई डोंट रिमेंबर अ मेमोरेबल चांस फॉर एस्टन विला अगेंस्ट यूनाइटेड एट ऑल। आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरे को विला का यही लगता है कि जब ये बहुत एग्जॉस्टिंग गेम्स आ जाते हैं ना मिड वीक उनके लिए, उनकी फट जाती है। ठीक, हाँ वो भी होम पे यार, कम ऑन। लाइफ इतनी बुरी चल रही है, स्टार्टेड टू सपोर्ट स्पर्स जस्ट फॉर द अंडरडॉग स्टोरी। सम गाइस सेड स्पर्स फोर्थ, चेल्सी सिक्स। ना, चेल्सी सिक्स नहीं आएगी। आई थिंक चेल्सी आर easily the top 5 teams in the league. Hangover of Bayern win, and that's what I'm saying. Like these hangovers, if let's say Villa finish outside of top 8, they play playoff games, then they have matlab, these midweek games will eat at Villa. I'm not saying Villa are a bad team and they can't finish top 4. We will talk about Villa as well. I think best case for Villa is also fourth. But I'm just saying that if I had to give a percentage of who comes fourth, मैं एग्जैक्ट परसेंटेजेस नहीं दूंगा। आई लाइक 19-20 का फर्क होगा स्पर्स एंड चेल्सी के बीच, एंड उसमें 17-18 का डिफरेंस होगा विला के में, मेरे हिसाब से। Why are people considering Liverpool a confirmed third? We are one CBDM injury away from crisis. I think it's all variance मेरे हिसाब से अर्श, because I think as a fit 11 and a squad that is, I understand depth is a huge issue for you, but depth for Liverpool fortunately can be remediated in January. That's what I feel. Um, and I think your squad is talented enough and your manager is good enough to one, manage multiple competitions and also go far into the league. Salah knows what it is to be like in a league hunt, and so has Van Dijk and Trent and Nunes and Diaz and Jota and Mac and Zobo and सारे लोगों को पता है भाई. Your club has full of talented people. Maguire was top in that game. Yeah. Maguire Evans की partnership पे at home आप एक गोल नहीं मार सकते. I refuse to believe. Like the only team which has not scored against, like I think, yeah, sure, United have like had the most clean sheets in the league and stuff like that. Completely understand, bro. But come on, man. Like Villa was 0-0. Porto scored 3 against them. Matlab, United had 2 away games, by the way, huh? United had an away game at Porto and then an away game at Villa.
20 scored against them. Spurs scored 3. Spurs were decimated them. Palace did not score against them. Barnsley did not score against them. Southampton did not score against them. But Liverpool beat them quite easily. Brighton scored 2 on them. Fulham ne nahi mara tha, but I think that's early Fulham. So I don't know, like Villa should have beaten United, which is why I am a little skeptical of their Villa की intensity अच्छी होती है. Villa can win any game, which is why I think they might even win a cup. But over the season, I don't know about Villa, but I can be wrong as well. When is Arsenal City most awaited game for football fans? February में है दोस्त, I think. First Feb को है. Real villain for us is our stubborn and overconfident manager. Don't be surprised if we move to second half of the table. Look, यही वाली बात है. Ange का ये जो Brighton वाली defeat थी ना, that could be either a good thing or a terrible thing. Because if you saw his interview, brother, I don't know if you, I'm sure you must have seen it. If you've not seen Ange's interview, by the way, as to why he did not make substitutions against Brighton, his reasoning will absolutely like hit you in the head. His reasoning was, I did not make substitutions because substitutions are irrelevant when you are playing like that. You might get a result, but it's an undeserved result. And this is like, he is, Ange is an absolute poet, man. Like full idealism. मुझे तो I was damn surprised. That's a very idealistic way of looking at football and respectable, sure. Bro, matlab, but that is like borderline. It's going to like kill you. It's gonna kill you in this league. And he has said in an interview, ki like, I know people say that you are not pragmatic and you don't do what other managers do, but I don't want to do what other managers do because I'm here because I have done what I've always wanted to do. You get the point? He is a purist. करेंगे दोस्त, करेंगे फॉर श्योर करेंगे. उसको पॉइंट सिस्टम समझ नहीं आता. अरे यार मेरी स्ट्रीम अटक गई, एक सेकंड. ये क्या बात है? मेरा कैमरा क्यों नहीं चल रहा? एक सेकंड. व्हाट द हेल? ये क्या बकवास हो गई यार? ये क्या है? मजाक चल रहा है क्या ये? Ah, thank God. Okay. Yeah, Dark Arts by Ange. Ange didn't like it. Mate is Australian. What do you expect? ये foodie and philosopher भी है क्या? Yeah. So चेल्सी पे वापस आते हैं. We'll just get to Spurs after this. So yeah, I think चेल्सी का वही है. मेरे हिसाब से चेल्सी थर्ड आने के लिए 20 पॉइंट का जंप मारना पड़ेगा. And 20 points का jump usually means you have to beat all, at least most of the top 6 teams at least once. इसका मतलब चेल्सी को यूनाइटेड को हराना पड़ेगा, चेल्सी को स्पर्स को हराना पड़ेगा, चेल्सी को लिवरपूल को हराना पड़ेगा, एंड वन ऑफ आर्सेनल एंड सिटी को हराना पड़ेगा. सिटी से तो हार गए हैं, तो आर्सेनल को हराना पड़ेगा एटलीस्ट वंस. That is how you make those 20-point jumps, right? Because the more you take away from the teams that are supposed to be above you, the more you get to make those jumps into the top 3. All right. So मेरे हिसाब से Chelsea's best case scenario is 4th. Third would be an unreal scenario. Unreal. Worst case scenario 5th. मेरे को बताओ एक, this is, by the way, मैं नजर वजर नहीं लगा रहा हूँ, but this is one thing which scares me about Chelsea. Like scared for Chelsea fans. If you don't know, earlier in the season, was it earlier in the season or in the summer or in the end of last season, चेल्सी ने कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी सेल्फ रिपोर्ट करी थी प्रीमियर लीग को, एंड उस पर अभी तक प्रीमियर लीग ने डिसीजन नहीं निकाला है कि क्या सीन होने वाला है उसका. अगर इस फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी से ट्रांसफर बैन लग जाता है, फेयर इनफ मैन.
या जब तक फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी से ट्रांसफर बैन लगता है, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी एन इशू. अगर चेल्सी को पॉइंट रिडक्शन हो जाता है, देन तो भाई मतलब ऑल बेट्स आर ऑफ. सो या आई जस्ट होप, like I genuinely feel so bad for Baba and all the subscribers who are Chelsea fans here. Ki you guys work hard to come third or fourth, and then Premier League अपने गोटे दिखा के तुम्हें 4-5 पॉइंट का डिडक्शन दे दे, and that slips you down. That would be horrible. Transfer ban, I don't think Chelsea will mind a transfer ban. But अगर if it's a point deduction, then I think there's an issue. ट्रांसफर बैन से तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिडक्शन हुआ तो मर जाएंगे वो, आप कहना चाहते हैं. इमेजिन थर्ड और लास्ट दिन सिक्स्थ कर दिया. इसलिए आई थिंक क्लियर लेक ने प्रीमियर लीग से रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो एसएप दे दो, ताकि चेल्सी को अपनी कंडीशन समझ आ जाए. या वी बेस्ट कौन रहेगा, एमोरेम और होनेस, दोनों में से कोई भी आ जाए भाई, आपके लिए तो बेस्ट ही रहेगा. बैन लग जाए, पॉइंट्स डिडक्शन नहीं चलेगा भाई, वो तो सारे ही चेल्सी फैंस कहेंगे. बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स गोइंग टू बी सुपर क्रूअल इफ दैट हैपेंस टू यू, एंड आई जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट होप इट डजंट हैपन, because you guys are playing some fantastic football on form. I think Cole Palmer is the best player in the league right now on form. All right, Chelsea पे बात कर ली. Villa chat quickly, what do you guys think is Villa's best and worst? Because like I highlighted for Aston Villa, I think Aston Villa's biggest problem is that after a tough grueling game na, they don't play as well. अच्छा वाह, अच्छा ठीक है. पंजाबी वाला नहीं, इब्राहिम भाई, आई एम वेरी सरप्राइज्ड आपने पंजाबी वाला बोला ना, इसलिए. What if Todd expected this? Who knows? Best fifth, worst eighth. You think Villa will go eighth? I don't think Villa falls below Europa League, chat. I think Villa will be in. अगर अगर ऐसा सिचुएशन रहता है जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया कि स्पर्स फोर्थ आती है, चेल्सी फिफ्थ आएगी, फिर आई थिंक विला का बेस्ट इज ऑल्सो फोर्थ, बट आई थिंक देयर वर्स्ट कैन बी सिक्स्थ. Yeah, I agree with this. You think Villa can come third? Oh, that would be huge actually. You know what? Best third. Wow. Last season, Villa, I think, came fourth, if I'm not wrong. Yeah, Villa came fourth, of course. That's why they're in the Champions League, Daksh. Villa came fourth last season. They were on 68 points, two above Spurs, who were on fifth, and 14 behind Liverpool. Can Villa make it? 68 points is 75 jana, I think is reasonable actually. If somebody gets 75, they are definitely top four. Can Villa get 75 points is the question. Villa will make to UCL round of 16. Best third, worst fifth. आई थिंक लिवरपूल ड्रॉप कर सकती है फिक्चर्स में, उस हिसाब से आई गेस. ये फिक्चर्स तो काफ़ी सारी टीम्स के बारे में बता देगा. देखो, इस रन ऑफ फिक्चर्स टिल द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक, थिंक लिवरपूल हैव सम टफ फिक्चर्स, चेल्सी हैव सम टफ फिक्चर्स एंड आर्सेनल हैव सम टफ फिक्चर्स. तो ये जो तीनों टीम्स है ना, लिवरपूल, आर्सेनल एंड चेल्सी, इनका ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होगा. Believe me, don't take United out. They will do this many times and somehow end up in fifth and sixth. ये तो I'm not taking United out anyway. But we'll get to United. Fourth and CL quarters, worst eighth. Ultimate target is to finish top four at best. Their ceiling. I think जाना पड़ रहा है, काम आ गया है. मैड्रिड के बारे में बात कर लेना, सीबी कौन होगा आ जाएगा तो बाद में देख लूंगा आराम से. थैंक यू, नो प्रॉब्लम. हैव अ गुड टाइम यार हर्ष, हैव अ गुड टाइम. So, I think Villa go for a cup this season. And I think they try to finish as high in the league as possible and as deep in the Champions League as possible. But I think Villa will target a top four. Right now, there is no difference between Chelsea and Villa in terms of points, and Villa can climb above Chelsea on points. What is very funny is, by the way, chat, अगर आप ये चीज ध्यान रखो, अगर विला मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट जीत जाती वो गेम, विला होती 16 पॉइंट्स पे, दे वुड हैव बीन फोर्थ. एंड आई थिंक सीइंग 18, 17, 17, 16 मेरे हिसाब से वुड हैव एटलीस्ट विजुअली मेरे को लगता कि हम विला थर्ड कर सकती है. बेस्ट फोर्थ, वर्स्ट यूईसीएल. What are your predictions for Liverpool and Chelsea? We'll talk about that tomorrow, brother. श्रेष्ठ टारगेट तो करेगी पर आएगी इस 50-50.
Hmm. Unless Villa get out of the round of 16 या फिर वो playoff round में बाहर हो जाती है Villa. Let's say they make it to the playoff round. Top 24 में आ जाती है Champions League के, which I think they should come. Actually, Villa should be in like ninth, 10th, or maybe like top 8 भी. We'll all should do this calculation on Monday actually. But अगर आप Villa को देखोगे, अगर Villa Champions League से राउंड ऑफ 16 से पहले बाहर हो जाती है प्ले ऑफ राउंड में, या राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो जाएगी, I think to the end of the season they can make a run for fourth. Villa manager is top class. Emery is top guy man. आप एमरी को कैसे रेट करते हो? आई थिंक ऑफ हिम वेरी हाईली. बहुत बढ़िया मैनेजर है. He is a squad maximizer man. No one's talking about this. Villa की squad depth is underrated. It's true. It's a very underrated quality of Aston Villa. अगर आप विला का लास्ट गेम यूनाइटेड के अगेंस्ट देखिए, जो उसमें वो जीते भी नहीं थे बाय द वे. लाइनअप, व्हाट वाज द ब्लडी लाइनअप? ये बेंच क्यों दिखा रहे? शो मी द ब्लडी लाइनअप ब्रदर. ओके, स्क्वाड देख लेते सीधा. एमी मार्टिनेज इज नंबर 1. इसको अगर कुछ हो गया तो ओल्सन विल बी इन गोल. ओल्सन इज नॉट दैट ग्रेट. But Dinia, Mings, Diego Carlos, Ezri Konsa, Matty Cash, Pau Torres, Ian Martsen, Nedlovic and Bogard. Bogard and Nedlovic बच्चे हैं. Midfielders is a very good thing. यहाँ पे McGinn injured है, but Tielemans, Barkley, Buendia, Bailey, Boubacar Kamara, Rogers, Amadou Onana, solid midfield. And उनके attack and wing भी बहुत अच्छे हैं. Jacob Ramsey, Watkins, John Duran and Jaden Philogene and Bidis. So yeah, it's a very good squad which I think is equipped for multiple positions. But I think the gap in their bench and the gap in their first team is a lot here. Nah, brother, I did not see. Duran is a clutch guy. Villa is more consistent, less sluggish than Spurs and Chelsea. Still think Villa 5th, Spurs and Chelsea anyone for 4th and others 6th. All right. Bas itne players, Ananya. We all can't sell hotels to fund our teams, yaar, Ananya. What can we say? So yeah, personally for me, best case scenario, Villa 4th and worst case Villa 6th. 4 to 6 के बीच मेरे हिसाब से विला आएगी. Alright. Newcastle United, very hot and cold. Let's do quickly to be honest, because Newcastle United also have a tough run of fixtures coming in, to be honest. They play Brighton, top team. अच्छी खेल रही है Brighton. Chelsea, top team twice. Arsenal, Forest. Yeah, that's till the international break. तो they will play teams जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं. फॉरेस्ट इज इन टेरिफिक फॉर्म, आर्सेनल इन टेरिफिक फॉर्म, चेल्सी इज इन टेरिफिक फॉर्म. हियर अवे है वो वाला प्रीमियर लीग गेम. ब्राइटन इन रियली गुड फॉर्म. सो आई थिंक आर्सेनल विनिंग द लीग, होपफुली लाला, होपफुली. बट या आई थिंक अगर आप न्यूकासल को टेबल में सोचोगे, सॉरी, अगर आप न्यूकासल को टेबल पे सोचोगे, आई थिंक न्यूकासल. Alright, chat, you tell me, what is the best for Newcastle? Best position for Newcastle. Unai Dark Arts. What is the best position for Newcastle? Lagging. Chelsea versus Liverpool predictions. I personally feel it will be 2-0 to Liverpool, but वो हम कल एक बार अच्छे से discuss करेंगे. What different can Zidane bring to United if he becomes manager? Bhai, he's not coming to United. Abhi United is still an attractive option for coaches, but not all of them. 6th best for Newcastle, 6th best for Newcastle, 5th, 8th this season you feel. All right. 5th, 6th, best maintaining UCL, 5th position, 6th position. Do you not think Villa have been lucky so far with this season, with John Duran scoring late winners to win games? That won't continue forever. But I think, Siddharth, you can say that for pretty much everyone, right? Arsenal lucky नहीं रही, वरना स्पर्स गोल मार देती, या सिटी और गोल मार देती, और ड्रॉ नहीं होता. For any team, यार. Look, a team will always be up in the table because of some clutch moments. Last season, Oscar Bob का clutch moment या Ortega का clutch moment ने सिटी को टाइटल जिता दिया था. That's all you need, man. Good play for most of the season, luck in the remaining games. Just asking, would Villa be aiming for title? I mean,
Is that the target of winning a club? I think that is Villa's long term target in the next 2 years. I think within the next 2 years, Villa will be aiming to fight for the league. If you look at Villa this season, उन्होंने apart from Musa Diaby किसी को जाने नहीं दिया. Watkins has stayed. John Duran has stayed. John Duran could have left, by the way. Bailey has stayed. They've added Amadou Onana. Kamara has stayed. McGinn has stayed. Uh, Konsa has stayed. Pau Torres, वगैरह मतलब Emi Martinez has signed a new contract. So it's very obvious that the long-term target of this team is to fight for the league, be it the next team जो उस टॉप 5 टॉप 6 मोनोपोली को तोड़ देगी या फिर उनमें से कोई चली जाएगी. तो चेल्सी के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्त. Seventh, Daksh, by putting European pedigree aside, don't you think Arsenal winning the UCL with this team will be easier than PL? Even Liverpool went that way. Yeah, I think UCL is a different. UCL में बताऊँ मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है सिद्धार्थ आर्सेनल के लिए कि अभी हमने चलो PSG को खेल लिया, बट हमने PSG जैसे टीम्स को बहुत कम खेला हुआ है. अभी मान लो हम विच इज द नेक्स्ट, अभी हम इंटर को खेलेंगे, ठीक है सिद्धार्थ. वी हैव नॉट प्लेड अ टीम लाइक इंटर इन फॉर एवर. इंटर की क्वालिटी, अवे फ्रॉम होम, इटालियन स्टाइल. We haven't played the Real Madrids. We haven't played this Barcelona. We played Bayern Munich last season when we remember what happened. We were completely nullified. So the reason I think it's not easy for us to win the Champions League, heritage aside, is that we are just not experienced in playing these teams and we don't know how to stop them properly and effectively, and we don't know how to beat them convincingly. PSG, I still feel, was an outlier because as good as the team is, it's still a team of lightweights and kids who are finding their way right now. Inter will tell us a lot कि आप इंटर जैसी टीम के अगेंस्ट कैसे खेल सकते हो. देखो, अगर आप इंटर वर्सेस सिटी याद रखोगे तो सिटी स्टिल हैड अ कपल ऑफ चांसेस. फोर्डन ने सीधा मार दिया था सोमर के हाथों में, and they still had a couple of chances which they did not take, but so did Inter actually. Thuram, Lautaro, देखो लोटारो एंड थुराम के साथ जब हम अगेंस्ट खेलेंगे तब हमें एक बहुत अच्छा ट्रेलर मिल जाएगा कि जब फिजिकल या पावरफुल स्ट्राइकर्स होते हैं आपके अगेंस्ट आप कैसा करोगे. सो इट विल बी very tough to see. So it's मेरे हिसाब से it's a lack of experience. I think we are just much more used to stopping and nullifying English teams. हमें पता है कि इस टीम में कौन डेंजर मैन है, कौन कैसा खेलता है, and very few teams are unknown quantities for us. Like I think Maresca will be an unknown quantity and Slot will be an unknown quantity. But in general, we will still have an idea कि चलो Palmer is a dangerous guy और Salah is a dangerous guy and Trent's a dangerous guy and stuff like that. So पेडिग्री असाइड, आई थिंक इंटर वाली गेम में हमें एक अच्छा रीजन मिल जाएगा देखने के लिए कि आर्सेनल अभी यूसीएल के लिए रेडी नहीं है. यूसीएल के लिए रेडी होने के लिए यू हैव टू बी देयर एवरी सीजन, यू हैव टू प्ले अगेंस्ट दीज टीम्स एवरी सीजन, गेट टू नो देम, गेट टू नो योरसेल्व्स, figure out what really clicks in European competition and then end up winning it. Because look, ideally any team can get to the finals of the European competitions. Last to last season Napoli versus Inter हुआ था semi-finals में, if I'm not mistaken, right? Last to last season Dortmund made it all the way to the finals, but it's not because they were the best teams, but sometimes these teams just know how to win those games, and Arsenal I don't think have that sort of pedigree का या heritage का, but most likely experience नहीं है ऐसी टॉप टीम्स को खेल के रोक के और जीतने का. हमें नहीं पता. हमें पता है प्रीमियर लीग में अब कैसे जीतना है. टू एन एक्सटेंट हम ज्यादातर गेम्स प्रीमियर लीग्स में जीत जाएंगे, बट चैंपियंस लीग में नॉट दैट क्लियर. इंटरप्रेट सो गुड वर्सेस सिटी, यस आई थिंक सो. आई थिंक अगर फेवरेबल मैचेस मिल जाए तो आर्सेनल फाइनल तक जा सकते. या हैव यू हर्ड द न्यू हाला मैड्रिड सॉन्ग? आई हैव नॉट. ऑल्सो प्लेयर्स लाइक एक्सपीरियंस इन द यूसीएल. ऑफ कोर्स वो उसने बोला था कि पेडिग्री असाइड, तो मैं पेडिग्री असाइड ही बोल रहा था. This format seems very unfair to teams finishing 8th to 16th, 9th to 16th, 9th to 24th. They play more games, more injuries down the season. Those first 8 will have fresh legs, less games to go. Yeah. But it's how the entire system is. It's a bit fairer because teams who would ideally not qualify can qualify. Like, yeah, it's a bit unfairer to the top teams जो top 2 आ जाते थे अपने ग्रुप्स में and फिर qualify कर जाते थे. But it's also a lot fairer for teams like Celtic and teams like मतलब
जब लास्ट सीजन तक ग्रुप्स डिसाइड होते थे तो आपको पता चल जाता था कि ओ ये टीम थर्ड फिनिश करेगी, ये टीम सेकंड फिनिश करेगी, ये टीम फर्स्ट फिनिश करेगी, और ये टीम तो मोस्ट लाइकली डेड लास्ट आएगी एक्सेप्ट द ग्रुप ऑफ डेथ। अब क्या है, चाहे अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी इजी एंड डिफिकल्ट फिक्सचर्स मिले एंड आप टॉप 8 या टॉप 24 में फिनिश कर सकते हो। जैसे सेल्टिक जैसी टीम कभी नहीं राउंड ऑफ 16 पे पहुंचेगी, मोस्ट लाइकली मोस्ट सीजन्स पे नहीं पहुंचेगी। बट इस सीजन सेल्टिक के फिक्सचर्स डिस्पाइट देम लूजिंग 7-1 टू डॉर्टमंड आर सो इजी दैट आई थिंक दे कैन मेक द टॉप 24 दैट वे। अनफेयर तो नहीं है, जीतो और कम मैचेस खेलो, दैट्स इट। या इट गिव्स स्मॉल टीम्स टू प्ले अ बिग लेवल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So yeah, I'm glad you guys get what's the point, right? I'm glad you guys understand what's the point of this new system to have more smaller teams and give more unpredictable matches. How is that unfair? You had the chance to reduce the number of games by winning. Yeah. By the way, as a small aside, when we until we return back to Newcastle United, how many points do you guys think is required for being in the top 24? Top 24 में आने के लिए what do you think is the points required? नेक्स्ट क्लब ले रहे हैं न्यू कासल का, मेरे को मैं बता देता हूँ। आई थिंक न्यू कासल बेस्ट केस सिनारियो सिक्स्थ, वर्स्ट केस सिनारियो नाइन्थ। आई थिंक न्यू कासल कैन गो रियली अप, बट इफ जनवरी में दे लूज प्लेयर्स लाइक ब्रूनो गिमारेश और ईसा कीप्स ऑन गेटिंग इंजर्ड दिस सीजन, वो बहुत मेरे हिसाब से आउटसाइड ऑफ यूरोप भी गिर सकते हैं। नॉट इवन जोकिंग। ब्राइटन विल आई मीन आई डिडंट नो ब्राइटन के लिए इतना फैन फेयर था यार। मैं तो ऐसे ही ले लिया जिनके मैं जानता हूँ फैंस हमारे चैट में, इसलिए मैंने विला ले लिया, स्पर्स लिया, स्पर्स नहीं लिया। स्पर्स लिया हमने अभी तक, स्पर्स नहीं लिया मैंने, न्यूकासल लिया था। स्पर्स भी लेना है अभी तो। विला ले लिया, न्यूकासल ले लिया, फुलम नहीं लेंगे, स्पर्स लेंगे अब। डू यू थिंक पीएल डिजर्व्स? भाई इफ यू डू वेल इन यूरोप व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स अ गुड चांस टू एक्चुअली गेट दैट फिफ्थ स्पॉट। I think Chelsea should be the outright favorites for the Conference League. I think one of United and Spurs should be outright favorites for the Europa League. One of them should be. Especially now that no Champions League team will fall down to the Europa League and no Europa team will fall down to the Conference League. So I think both of them should be one of the favorites. And देखो चैंपियंस लीग में तो हमें देखना पड़ेगा दोस्त, चैंपियंस लीग का तो कोई भरोसा नहीं है। I know we haven't, but like I said, it's gonna be a long stream, brother. I said it's gonna be a long stream. So if you want to stay, it's fine. And look, the reason it's been 2 hours because I want to give every team a proper time, right? अच्छा नहीं लगेगा कि मैं चेल्सी को 10 मिनट दूं, लिवरपूल को 10 मिनट दूं, आर्सेनल को 20-30 मिनट दे दूं, सिटी को 20-30 मिनट दे दूं। स्पर्स चैट, बेस्ट केस सिनेरियो फॉर स्पर्स। बोथ विल टेक दैट स्पॉट। नो फोर्थ से शायद से पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। तो एक दो सीजन में पता चलेगा, अभी तो इट लुक्स लाइक एनीथिंग बिटवीन 17 to 20 विल बी इनफ आई गेस। पॉइंट्स मेरे हिसाब से तुम 10 से 12 पॉइंट्स ले लोगे, तुम्हें मिल जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो फॉर स्पर्स एंड वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर स्पर्स। You think Spurs best is fifth, worst is seventh, says Prince. Fourth and eighth. Oh, that's a big swing. Fifth, fourth. Yeah, I will talk about United also. Eighth. You think, wait, to him, you think worst is eighth? Best top four, worst fifth. I think Chelsea and Spurs will be fourth, fifth. दोनों का मेरे को लगता है फोर्थ फिफ्थ होगा। विला भी हो सकती है ऑफ कोर्स। सो आई एम गोना पुट स्पर्स फोर्थ टू सिक्स्थ। थर्ड, oh, that's a brave shout. Wrestle Universe says, I think that's probably because of what you feel about Ange. टॉप 8 के लिए 10-12 पॉइंट्स ना दक्ष भाई। आई डोंट नो, व्हाट विल डू इज मंडे को ना इब्राहिम भाई विल गेट ऑन अ प्रॉपर एक्सेल शीट एंड विल कैलकुलेट, ठीक है? विल सी 4 and 10 ना, कम ऑन चैट, 10 तो नहीं। Yeah, because it's the club I never trust us to win. Oh man, 16 to 18 would be nasty for top 24 man. फिर तो बहुत टीम्स नहीं आएंगी। 4 and 9, 7th and Big Ange will join some other club. Damn, I don't think Ange leaves, by the way. यहाँ भी Excel sheet.
Here is my logic. आई थिंक स्पर्स के अगले फिक्सचर्स क्या है. मैंने स्पर्स के अगले फिक्सचर्स देखे नहीं एक्चुअली, बाय द वे. स्पर्स फिक्सचर्स अगर हम देखें तो लास्ट दे लॉस्ट टू ब्राइटन विच इज एब्सोल्युटली इनसेन. टॉटनहम वर्सेस वेस्ट हैम. ओह. पैलेस जीत जाएंगे. ये टफ गेम. टफ गेम हियर एज वेल मैन. इप्सविच से जीत जाएंगे, आई होप. स्पर्स बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है यार चैट, इसलिए मैं फोर्थ टू सिक्स्थ रख रहा हूँ उनको. लुक, टू बी फेयर, like they're literally 4 points behind Villa. All right, 4 points behind Villa. I don't think it's a big issue right now, especially अगर Villa के tough fixtures आ जाए. Chelsea के भी tough fixtures आएंगे. Let's say worst case scenario for Chelsea in the next 4 games they drop points in 2 of them. Let's say दोनों draw भी हो जाते हैं, ठीक है, 16 पॉइंट्स पे आ जाएंगे. अगर स्पर्स 2 गेम्स जीत जाते हैं अपने नेक्स्ट 4 से, जिसमें से इप्सविच है और पैलेस है, तो देयर लेवल विद चेल्स, राइट. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लाइक I think Spurs can make a top four run. Why not? भी कीन को भी समझ में आ गया था लास्ट. एंज को सैक कर देगा 8th फिनिश पे. They would be around 10-12 points below third. Yeah, I think so too. I think so too. I think the best case scenario for Spurs is they finish fourth. I think sixth maybe is their worst. Because I think they have good attacking numbers, chat. I think अगर आप attacking numbers देखोगे, Spurs have the best attacking numbers. And at some level, you will catch up to it, right? At some level, वो mean पे regress होके, you will, oh God, I can't believe I said mean पे regress होके. That's such an invert the wing वाला saying. Last time 6th, तो इस time 4th is improvement. 4th, 7th worst. Even if Spurs finish second, they still win a second trophy. I think Europa League they can win, by the way. Son आएगा तो better होगा. I think Son is back, no Mihir? Son is back for Spurs. Yeah, man. I mean, Werner की जगह अगर Son होता, they could have won by more, yeah. They could have won more games. Dream scenario will be 8th and then Poch comes during and brings the hero. Shut up. You can't be Ange out wrestle universe. Shut up. No way. No way. I think Spurs can finish 4th. And I think continuity is a huge issue for a huge bonus for Spurs. A lot of players are the same players and they have a very, very young core. Son is in contention. Looks like FC25 Spurs has traumatized. FC25 Spurs is a different beast. Red Rodri says Solanke. Solanke will be there for sure. Ange Pookie, mate. Continuity की वजह से I will rate Spurs high. I think their attacking numbers are phenomenal. I think Ange is one of those managers who will stick to his principles, and I think that will give them some success. Still think they're not as good as Liverpool, Arsenal, City. I think it will be direct Spurs versus Chelsea for 4th. Maybe even Villa. Spurs, Villa, and Chelsea for 4th. All right, bias aside, if you had to pick right now between Villa, Spurs, and Chelsea, who would you pick for 4th? Who would you pick for 4th between Villa, Chelsea, and Spurs? Bhai, that guy is a waffler, man. Rise of Spurs featuring Ange. Rick says Chelsea. Ananya says Chelsea, of course. Dabu says Chelsea. Yatharth says Spurs. Siddharth says Chelsea. Villa any day says Hussein. All right. Spurs, Chelsea, Villa, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Chelsea. Without Son, Spurs don't look like Spurs anymore. There was a time they had Kane, Son, Dele Alli, Eriksen. Man, what happened to Spurs? Just no investment in the squad, man. Chelsea, they are class. CFC, Chelsea, Villa. Villa, Man United is coming for all. Bhai, imagine if Man United come 4th, man. That's be insane. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Chat 289 people are here. Thank you so much for joining in. Stream like कर दो अगर अभी तक नहीं करी है. Subscribe if you are new. And yeah, let's move on to the next club after Spurs, which is our final Premier League club of the day, Manchester United. What are we, chat? We are Man United. Look, man, things are horrible for United. The fact that they managed to get a draw versus Villa is huge. People don't realize it, but it's huge. Draw versus Villa, draw versus Porto, loss to Spurs, draw versus Twente, draw versus
Palace, big win against Barnsley. 3-0 Southampton, loss versus Liverpool, loss versus Brighton, win and Fulham. And the upcoming fixtures, they play Brentford, which by the way apparently is going to be क्योंकि उगारते को भी इंजरी हो गई है मेनो को भी इंजरी हो गया है मेनो को तो डेफिनेटली कुछ हो गया है उगारते का अभी तक पता नहीं है ब्रेंटफोर्ड एट होम फेनरबाचे अवे एंड देन वेस्ट हैम अवे बीच में लेस्टर के साथ कप एंड देन चेल्स के साथ गेम बिफोर लेस्टर के साथ लीग में एंड देन इंटरनेशनल ब्रेक ये वाला गेम बड़ा मेरे को नहीं लगता उतना इजी होने वाला है जितना लोगों को लग रहा है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक टॉक अबाउट मैड्रिड फर्स्ट इन ला लीगा डन 29 20.9 में ऐसा क्या जोड़ है मैं बताता हूँ 29 20.9 पे आपको जोड़ने पड़ेंगे बॉस 22 22 तो 34 से स्टार्ट किया था 12 लोग और जुड़ गए हैं स्ट्रीम पे हैमस्ट्रिंग फॉर उगारते after any you come see the difference please remember me after any left back come you see the difference all right left back is a huge issue I don't know why Mazraoui doesn't play left back yaar chat hello we have two tough games before we play United and we will drop points as a Liverpool so United can close the gap my only issue with United is they have lost all their cushion सारा क्वेश्चन गायब चैट मजाक नहीं कर रहा अगर ये विला कह रहा हूँ अगर ये पैलेस के अगेंस्ट जीत जाते और ये 11 पॉइंट पे होते हैं ना ये these guys would be above Spurs these guys would literally be above Spurs right now if they just won one more game in the league चाहे वो ब्राइटन से लास्ट में गोल नहीं खाते या वो पैलेस के अगेंस्ट एक गोल मार दें पैलेस वाले तो जीतना चाहिए था इनको these guys would literally be just behind Fulham and above Spurs and हम कहते हैं कि यूनाइटेड कैन कम जैसे हमने स्पर्स के लिए कहा 4th to 6th हम कहते हैं यूनाइटेड कैन कम 4th to 6th so let me ask you this 7 games 8 points I understand in isolation it's terrible for Manchester United बड़ा क्लब है ये है वो है in terms of the relative table positions if you look at it just 2 points behind Spurs 3 points behind Fulham 4 points behind Brighton and Newcastle is it it's bad we can all agree it's bad is it doomsday bad though like let's say Spurs drop their points who are Spurs playing Spurs are playing West Ham Spurs are playing West Ham let's say they drop points against West Ham draw हो जाता है या हार जाते हैं and United win United के अभी easy fixtures है but Brentford is not easy actually mid table shut up man Ten Hag forever had we won Palace or Forest we would be joint second yeah I remember अरे ऐसे मत करो यार किसी का रोना देख के खुश नहीं होना चाहिए जस्ट 50% ऑफ दैट 4-0 परफॉर्मेंस बाय ब्रेंटफोर्ड एंड दिन बन जाएगा biggest club in the UK 14th place is very bad no it's bad for sure but you know how sometimes like for example Newcastle being 7th like isn't like oh तुम तो यूरोप नहीं फिनिश कर पाओगे and stuff like that they're not that far away from top 4 actually you know it's the same thing I'm asking for United like I don't agree with the fact that the season is over you know like season is over top 4 खत्म हमारी उम्मीदें से 5th 6th होनी चाहिए I don't agree I if things go their way and that's a big if by the way because for things to go Manchester United's way they have to be at their best but also other teams have to be not at their best I think United gain points over the next 4 games for sure they gain points problem is cushion सारा चला गया you know chat जो गेम्स बीच में यूरो आएगा तो डिफेंस बेटर होगा यू कैन होप सो एंड सो ऑलराइट आई डोंट थिंक टेन हाग कैन डू इट आई एंड दैट मैं भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं Maguire is the best player I agree with that also
If I get Sydney Sweeney level, if I matter of 3 games next international break में narrative change जाएगा हो सकता है and that's what I'm saying. Next international break तक narrative बहुत बदल सकता है. And we'll probably take clips from this stream and revisit for the next time. But I'll tell you this, chat. I'll tell you this. Manchester United. Um, okay, you tell me what is the best possible for Manchester United? There's still 93 points to play, which is what I'm saying. It's a huge season, abhi tak. We will make a comeback, GG. Top 10, we are losing cushion over the bench too now. It's true. United ki depth is a huge issue right now. With Mazraoui is also injured, right? Mazraoui को भी तो कुछ हार्ट वाला हो गया था. So wait, for Brentford, United are without Mazraoui, are without Ugarte, are without Meno, are without Shaw. और कोई? That's also fair. Maz is gone. We are either playing Lindelof or Evans at left back now. Maguire is also gone or what? No. I think right back Lindelof, left back Dalo. I think it's going to be that. Right back Lindelof, left back Dalo. Top 5 is still possible. Anthony had to know. Array, let's not joke. Let's have a serious discussion. No chat, come on. 260 people are here. Last season I fight for ETH, but this season I am regret. Magu also injured. So it'll be Delict and Lisandro. Right pe I expect to be Lindelof. Left pe I expect to be Mr. Dallo. Casemiro and Ericsson in the middle. Mount is back. So Bruno to start, Mount for sub. Rashford, Garnacho, ya Ahmad, and Hoyland? Will you start Hoyland or will you start Xerxes? Dallo other Portugal. If we gain 75 points in 93, where secret gamers 75 points is not easy. 75 points is approximately 25 wins. Chalo, let's say you 25 wins और बीच में अगर तुम ड्रॉज भी घसीट दोगे थोड़े बहुत 75 पॉइंट्स बनाने के लिए तो रिमेनिंग अभी कितनी गेम्स बाकी हैं 31 गेम्स बाकी हैं 31 गेम्स में से अगर तुमने मैं कहता हूँ 20 जीत गए और 11 ड्रॉ भी कर लिए अनबीटन गए तब 71 पॉइंट्स होंगे 75 पॉइंट्स इज इनसेन लेवल मतलब जेन्युइनली 75 पॉइंट्स आउट ऑफ 93 is near title contention form. 75 points is insane to think about. 22 points, 22 wins. Yeah, so for 75 points, you need 22 wins and 9 draws and 0 losses. मैं कहता हूँ, even if you draw against Chelsea twice, Arsenal twice, Liverpool once, City once, you will only afford 3 more draws. As an agar if United do this, then I think this is the biggest comeback I have seen. This 93 point thing is like 30 chapter के एग्जाम के लिए 6 महीने मिले हैं लास्ट 30 दिन में. You're saying एक दिन में एक चैप्टर का. You know what? That is so accurate, Anshul. That is so accurate. Ten Hag डालो को राइट बैक खिला कर सकता है उस यूज दिस बट लेफ्ट बैक ही नहीं अब तो. Bruno has single-handedly cost 2 to 3 games. Can Anthony actually play LB? Oh, well, he can press, but he'll get beaten in the air so badly, yaar. Especially Mbuemo वगैरह के साथ तो. Licha can play LB. That's true actually. Lisandro can play LB. But Magu is injured. You don't have a CB. So unless Evans and Delict आप center में खिलाओगे और Lisandro को left back खिलाओगे. Lisandro at left back isn't that bad a shout to be honest. 60 होगा max. Yeah. United for a reason. मैंने तो ये कल भी बोल दिया था. I personally think it's time. Look, Sir Alex, legend of the club, but you've paid him 2 million a year over 10 years. You've given him enough pension, man. 20 million. He's
रिटायरिंग अ मिलियनेयर, ही इज रिटायरिंग अ मिलियनेयर. आपने उनको सड़क पे नहीं छोड़ दिया. एवेंस खेलेगा एलबी तो इट्स ओवर भाई. गार्ना भी इंजर हो गया. गार्ना का इंजर हुआ है. लुक 93 पॉइंट्स में इफ यूनाइटेड गेट 60ish पॉइंट्स, आई थिंक 60ish पॉइंट्स इज ऑल्सो टॉप लेवल मैन. बिकॉज अगर आप 60 पॉइंट्स के साथ 68 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके ना, 68 पॉइंट से लोग फोर्थ आ जाते हैं भाई. 60 पॉइंट लाना ही बड़ी बात है, मजाक भी नहीं कर रहा. 68 पॉइंट फिफ्थ ब्रो. 60 पॉइंट्स अगर यूनाइटेड के आ गए, दे हैव वन भाई. मतलब दे हैव टर्न देयर सीजन अराउंड, मजाक भी नहीं कर रहा. फॉर 68 पॉइंट्स यू गेट फोर्थ फिफ्थ. मजाक भी नहीं कर रहे. इन द लास्ट टू सीजन यू आर गुड इनफ फॉर फोर्थ और फिफ्थ फॉर विद 68 पॉइंट्स. बट वही बात है, मुझे नहीं लगता 60 पॉइंट्स भी आएंगे. 60 पॉइंट्स इज ऑल्सो इनसेन टू थिंक अबाउट इन 31 games. वी नीड टू बीट बिग टीम्स होम एंड अवे एट एनी कॉस्ट. आई थिंक सबसे पहले प्रिंस यूनाइटेड को एक चीज करनी पड़ेगी, हारना नहीं है. गोल्स कंसीड नहीं करने. एंड एज क्लीशेड एज इट इज, क्लीन शीट्स आपको रखनी पड़ेंगी. यू विल हैव टू कीप द मोस्ट क्लीन शीट्स. सो बेस्ट केस फॉर यूनाइटेड लास्ट टाइम, कोई मेरे को जवाब दे दो एंड देन विल मूव टू ला लीगा. अमाद भी इंजर्ड है. अरे वाह. आई पर्सनली थिंक यूनाइटेड बेस्ट सिक्स्थ. मतलब सिक्स्थ, आप समझ रहे हो, सिक्स्थ इज घुमा दिया सीजन भाई. बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग हो गए. एंड वर्स्ट आई थिंक एट्थ या नाइन्थ. आई थिंक यूनाइटेड लास्ट सीजन का एट्थ फिनिश करी थी ना. इन माई प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन वीडियो बाय द वे आई सेड यूनाइटेड सेवंथ. आई थिंक I said they'll improve this. How many losses did they have last season? 14 losses, 6 draws. 2 draws, 3 losses. 14 losses. मेरे को नहीं लगता. I think 14 losses आप avoid कर सकते हो. उसके close. I think 6th to 8th United. 6th to 8th. Best 16th and worst अभी है उस पे. अबे चुप करो. Best is Europe qualify. Will you take Conference League as a United fan? Fan base divide. Look man, I think here is the thing. I think if Ibrahim bhai, if you were saying that Glazers are money minded and Glazers don't care about the club and we need more involved owners who take ruthless decisions, then I'm sorry, you can't pick and choose the ruthlessness. आई थिंक इफ रूथलेसनेस में आपने डिसाइड करते हो लेट्स से नेक्स्ट सीजन कि हम रैशवर्ड को बेच देंगे, हम एंटनी को बेच देंगे, हम लिंडलॉफ को बेच देंगे, हम कैसेमिरो को बेच देंगे, हम रूथलेस होके हमने लेनी यूरो ले लिया. मड्रिड भी इंटरेस्टेड थी, हमने ज़्यादा पैसे दे के लेनी यूरो ले लिया. हमने हॉयलैंड एक अच्छा यंग स्ट्राइकर उठा लिया बिकॉज वी वॉन्ट टू बी. दीज आर फुटबॉल पीपल. यू कांट से कि लाइक गेट फुटबॉल पीपल इन द क्लब, बट फुटबॉल पीपल डोंट डू दिस बिकॉज आई डोंट लाइक दिस. नो 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 नो. देन यू जस्ट वांट ओनर्स हु डू व्हाट यू लाइक. अगर रूथलेसनेस चाहिए तो भाई रूथलेसनेस तो हर जगह लेनी पड़ेगी. देखो समटाइम्स इवन आई डोंट अग्री विद Arteta's decision, but I wanted this guy. He got rid of Steve Round, one of his assistant managers who disagreed with him. He got rid of Aubameyang, right? Sometimes he'll get rid of players like Ramsdale, who I loved, but then it's necessary sometimes, man. So all of these things will happen. Will United fans take Conference League? No. Best sixth UEL trophy, worst nine. यार यूएल में भी ना प्रॉब्लम ये है यूनाइटेड की. यूएल में दो पोर्टो के साथ और ट्वेंटे के साथ उन्होंने ड्रॉ खेल लिया, विच आई डोंट थिंक आर लाइक पॉट वन टीम्स. सीएल चाहिए भाई इन ऑर्डर टू साइन बिग नेम्स एंड compete with top three. Shravan, I'll be super duper honest. I think there are at least 5 teams right now who are better than United. City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Spurs. I think at least these 5 are better than United. इसमें तो अभी तक विला नहीं जोड़ी है मैंने, वरना तो 6 टीम्स ही बेटर हो सकती है यूनाइटेड से. आई थिंक देर एटलीस्ट 5 टीम्स बेटर देन यूनाइटेड. इसलिए मैं कह रहा हूं बेस्ट केस सिनारियो यूनाइटेड के लिए सिक्स्थ होगा, वर्स्ट केस नाइन्थ होगा. यूनाइटेड विल साइन बिग नेम्स इवन विद ये. आई थिंक ये तो मिथ काफी अच्छे से चेल्सी ने भी डिस्पेल कर दिया दैट इवन विद कॉन्फ्रेंस लीग यू कैन साइन प्लेयर्स लाइक पेड्रो नेटो एंड स्टफ लाइक दैट. यार ऐसा तो कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से कर लेगा. बेस्ट एफए कप एंड एट पीएल. Alright, last question to United fans before we move to La Liga. Will you keep Eric Ten Hag if he gets you another trophy, an FA Cup,
An FA Cup or a Carabao Cup. An FA Cup or a Carabao Cup he gets you, will you keep him for another season? सोच के बोलो, बिकॉज अभी मोमेंट में बह के ना बोल दो हाँ 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 या नहीं नहीं नहीं. सोच के बोलो. Three trophies in 3 seasons. I am not even joking. I'm not even throwing shade. It's a fantastic achievement. But कप टीम वाली बात जो मोहक कहता है. Yes says तुहिन. Nope says खामोश. पैसा बहुत लगता है जब चैंपियंस लीग की जगह कॉन्फ्रेंस लीग खेलते हैं. That's true. और यूरोपा लीग. Never. No, it's overdue. Hell yeah. We will back our manager. No, if we cannot. So it's pretty obvious that the fan base is pretty divided in this. With at least sixth place in the league, then yes. So sixth plus trophy is your cutoff point. Okay. Yes, if he wins the league. Abey sale. I think there are only 5 opponents which they can take points comfortably apart. Nah, nah, nah. Look, I'll tell you one thing, and I'll give some reason of being positive for United fans. Chelsea now for a large part of season, I think first half of the season Chelsea were terrible. 13th, 12th, 14th, 11th इधर ही hang कर रही थी Chelsea, which I think is also possible for Man United. But second half में Chelsea ऐसे change हो गई थी और वो 6th तक आ गए थे. तो अभी भी 6 is not out of bounds. Chelsea का pretty much एक title contention form था in the second half of the season. मजाक भी नहीं कर रहा. Something like Chelsea had third most points or second most points in the league in the second half of the last season. Good cup manager, I think, but now league manager चाहिए. We will be back. We will back ETH no matter what. But next manager होगा कौन वो भी देखना होगा. That's also true. Win FA Cup, Ten Hag should stay to benefit 99. अरे चुप करो यार. I am confident. As Barca fan, no, not United fan, but no, it's tactically ineptitude. I think वही बात है. इतना पैसा, like, I think it depends time to, like, person to person depend करेगा. All right, chalo, we're done with United. Nice discussion on Man United. Now, chat, I will take a 1 minute break and then I'll come back to La Liga and we'll talk about Real Madrid and then we'll talk about Barcelona. Though the only two teams we're talking about from La Liga. I'm sorry अगर आप एटलेटी fan हो, आज बात नहीं हो पाएगी उनके बारे में. And then we will also talk about the Bundesliga briefly. All right. So give me 2 seconds. Let me set it up, and I'll see you in a minute. Let me give my voice some rest also. हम 3 घंटे stream करने वाले almost. So I think I deserve a short 1 minute break. Okay. I'll be back in a sec. All right, we're back. Welcome. I'm a bit refreshed. Now we can talk about आराम से करना ला लीगा का एक आर बात करना. अच्छा, कोई बात नहीं, करेंगे. टेन हाग इज इनएविटेबल. टैक्टिक्स में मुझे ट्रॉफी चाहिए. अच्छा, टैक्टिक्स गांड मरा है, मुझे ट्रॉफी चाहिए. सच तुहिन सही यार. तुहिन जैसी लाइफ होनी चाहिए भाई. गांड मरा टैक्टिक्स, मुझे ट्रॉफी चाहिए. Not Atleti fans, but what do you think is going wrong with them? I think whenever you
in my view, whenever you sign a lot of players, a lot of players, like more than 5, when ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर्स आप साइन करते हो ना, थोड़ा टाइम लगता है जेल होने में टीम को. एंड फुटबॉल इतना रूथलेस हो जाता है कि बाकी टीम्स में कभी कभी इतने इश्यूज आते नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल मैड्रिड को ही देखो, उन्होंने इतने प्लेयर साइन नहीं किया, बट अम्बापे को ही फिट करने में इतना घिचम फुचम होना पड़ रहा है एंचेलोटी के मल्टीपल सिस्टम्स बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड लॉट ऑफ डिफरेंसेस. So, yeah, I think sometimes when you sign Alvarez, how does he fit into attack? Sorloth, how does he fit into attack? Gallagher, how does he fit into attack? Samu को आपने बेच दिया, इसको बेच दिया. I think there's just a lot of chopping and changing at Atletico. But if you look at the table, it's not that bad. Like हम ऐसे बात करें जैसे Atletico ninth पे है. So I don't think there's anything wrong with them. It's just a team that is learning how to play with each other. It's a normal part of squad churn. मेरे हिसाब से. एंड देखो भाई, ला लीगा, वाओ, बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल. चैट, बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल, सिटिंग प्रिटी विद 24 पॉइंट्स, 9 गेम्स, 8 विंस, 1 लॉस. एंड वो 1 लॉस भी क्यों हुआ? बिकॉज इतने ज्यादा स्विचेस हो गए थे. एंड रियल मैड्रिड 9 पॉइंट्स, 6 विंस, 3 ड्रॉस, 0 लॉसेस. दो, एक भी गेम नहीं हारी है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन इज लो ब्लॉक्स एंड डॉजी डिसीजंस. 13 के जीटी के साथ 3 पॉइंट बिहाइंड बार्सिलोना. मैड्रिड अपना लास्ट गेम जीती है, बार्स अपना लास्ट गेम जीती है इंटरनेशनल ब्रेक से पहले. अगर हम इनके अपकमिंग फिक्चर्स देखेंगे, हम पहले बात करेंगे रियल मैड्रिड की, द टीम इन सेकंड दिस टाइम. नाउ Real Madrid post international break will have Celta Vigo, who is a great team. Celta is a dangerous fixture for Real Madrid, away from home भी है. उसके बाद डॉर्टमंड, जो एक काफ़ी कॉमन फिक्चर है, आई थिंक रियल शुड विन दैट एट होम. उसके बाद एल क्लासिको, वैलेंसिया नॉट एज बैड, मिलान शुड बी डन. उसके बाद थोड़े से इजी फिक्चर्स आ ही जाएंगे मैड्रिड के लिए, बट अगले 3 गेम्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मैड्रिड. Now, here for Madrid, I think one of the biggest problems for Ancelotti has been कि सिस्टम कौन सा खिलाए. आपको याद होगा, जूड जब नहीं था तो डिफेंसिवली दे लुक्ड सो वीक. फेडे हैड टू डू अ लॉट ऑफ रनिंग एंड देन मॉडरिच हैड टू, मतलब 39-year-old मॉडरिच हैड टू रन इंटायर गेम्स. चुआमेनी सेंटर बैक खेलना पड़ रहा है. कामाविंगा वाज आउट. अभी कारवाल को एसीएल हो गई है. जोन मार्टिनेज, जो उनका अकेडमी वाला बच्चा था, उसको एसीएल हो गया. एंड रैंडमली लाइक पीपल वर पिकिंग अप इंजरीज लेफ्ट राइट सेंटर नो मैटर व्हाट. एंड सो द आइडिया वाज दैट इस सीजन रियल मैड्रिड एक 4-3-3 खेलेगी, बट दैट 4-3-3 सिस्टम इज अ वेरी टैक्सिंग सिस्टम ऑन जूड बेलिंगम. ठीक है, अभी जूड जा सकता है 3 महीने सर्जरी के लिए. अभी विनिशियस को शोल्डर की इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल ब्रेक में भी नहीं गया था. ठीक है, सो मैड्रिड की इंजरीज आर अ ह्यूज कंसर्न दिस सीजन. एंड इट साउंड्स लाइक इवन इफ मैड्रिड डू ट्राई टू स्ट्रेंथन सम फॉर समबडी इन जनवरी, बड़ा मुश्किल होने वाला है. बिकॉज वन, मैड्रिड विल नॉट स्पेंड मनी अनलेस इट्स अ टॉप टैलेंट. दे विल नॉट ओवर पे फॉर अ रोल प्लेयर. सेबायोस को इंजरी हो जाती है तो उनके बैकअप्स को भी इंजरी हो रही है. ऐसा नहीं है कि मैड्रिड की फर्स्ट 11 इंजर्ड होती है तो बैकअप्स पर रिलाई करना पड़ रहा है. बैकअप्स भी इंजर्ड हो जाता है. ब्रहीम इंजर्ड हो जाता है. गुलर को उतना टाइम नहीं मिलता है. क्रूज को वो काफी मिस करते. देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ इश्यूज फॉर रियल मैड्रिड. इंटरनेशनल ब्रेक वाली इंजरी सीरियसली मतलब परसों तक फिट हो जाएंगे सब. ये देखो, ये सबको ही लगता है. विनी वुड बी सुपर सब. एंड सो द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड फैंस इज व्हाट सिस्टम शुड यू गाइस प्ले. शुड यू गो बैक टू द 4-3-3 नाउ दैट जूड इज बैक, एंड जूड से आप भगा भगाई, मतलब मजदूरी एज यश सेस करो. और ना, I think the fact that he was substituted in that game, especially when I think Madrid की या तो बहुत नैरो सी लीड थी या लीड थी नहीं. ठीक है, बट विनी को शोल्डर पे तो कुछ हुआ था. आई रिमेंबर वॉचिंग दैट गेम. सो what do you guys think is the next system that you guys should play? 4-4-2 diamond, which you guys played last season with Vinny Rodrigo up top, Jude उनके पीछे, और फिर 3 मिडफील्डर्स. क्योंकि I think Kamavinga is back, I think Chouameni is back, I think Modric and Fede are fit. तो you have midfielders who can play. Chouameni भी खेल सकता है. डिफेंस में लेकिन आपको मिलिटाओ इज फाइन, राइट? दे वर अप 2-0, और देन आई मिसरिमेंबर. बट मिलिटाओ इज फाइन, रूडिगर इज फाइन. राइट बैक कौन खेलेगा? लूकस वास्केज,
लेफ्ट बैक कौन खेलेगा? Who's playing left back? Ferdinand Fran. Bring Haaland by swapping Rodrigo, says Foxen. ये तो नहीं होने वाला. Think Salah will finally get his revenge. You never know. You never know. But वो तो नवंबर में, वो तो after international break है. But Madrid का system is going to be the biggest headache, and I think Ancelotti will probably use this international break to trial a system and see वो क्या खिला सकता है. अगर आप एक डायमंड खिलाते हो, you will be basically using all your midfielders. यस, आप गूलर को डाल सकते हो एक पॉइंट पे, फेडे तो खेलेगा ही खेलेगा, जूट तो खेलेगा ही खेलेगा उस डायमंड में. बट आपको फिर चुआमेनी को नहीं खिलाना पड़ेगा. सो हु प्लेज एट द बेस? इफ कामाविंगा प्लेज एट द बेस ऑफ द मिडफील्ड with Fede on one side and Modric or Guler on the other side and Jude in the 10, क्योंकि किसी को तो सेंटर बैक का बैकअप रखना पड़ेगा ना. आप दो सेंटर बैक्स थोड़ी खेल सकते हो. एलाबा का पता नहीं कब वापस आएगा. रूडेगर इज देयर फाइन, मिलिटाओ इज देयर फाइन, बट और कोई सेंटर बैक खेलने के लिए है ही नहीं मेरे हिसाब से. नहीं, अभी रियल मैड्रिड की ही बात कर रहे हैं अभिनव. ये मेंडी खेल रहा है और फ्रैन खेल रहे हैं, वो दोनों खेल रहे हैं. क्रूज जैसा एक पास निकालने वाला बंदा चाहिए. भाई सबको लगता है क्रूज जैसा पास निकालने वाला बंदा एग्जिस्ट करता है. डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. मिडफील्ड में एक क्रिएटर की कमी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, सब ठीक हो जाएगा. मेरे को बताओ क्या लग रहा है साहिल, ये जो मिडफील्डर में जो क्रिएटिव फोर्स की कमी है ना, मजाक नहीं कर रहा. पोस्ट एल क्लासिको जब ये वाला इंटरनेशनल ब्रेक का पीरियड खत्म हो जाएगा, जो इंटर पीरियड है 4 गेम्स का, इसके बाद ना, अगर if you just take a small bitter pill and you just play Arda Güler, fuck everything, fuck the result, fuck the draws, just play Arda Güler for 7-10 games in a row and just rely on Mbappe, Vinny, Rodrigo, Jude and बाकी सबकी brilliance to get you the goal. किसी ना किसी को तो क्रिएटिव फोर्स बनना पड़ेगा. देखो, मॉडरिच 40 गेम तो नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. 39 का हो गया है. इस गेम पे, इस सीजन में मैड्रिड को यूसीएल में बहुत लंबा खेलना है, कोपा डेल रे में बहुत लंबा खेलना है, लीग में बहुत लंबा खेलना है एंड समर में क्लब वर्ल्ड कप में बहुत लंबा खेलना है. तो आपको भी पता है मॉडरिच इतना लंबा तो नहीं खींच पाएगा. ही विल ऑल्सो ब्रेक डाउन. यार मैंने तो जब तक पढ़ा था फब्रिजियो ने इसको खारिज कर दिया था, सो आई डोंट नो अंशुल. बट द पॉइंट इज दिस, देयर इज एब्सोल्युटली नोबडी राइट नाउ हु कैन बी दैट क्रिएटिव फोर्स. जो बन सकता था निको पास, उन्होंने कोमो को बेच दिया. सो निको पास इज ऑल्सो नॉट देयर. Is there a creative player as good as Cruz that Madrid can buy in January? I doubt it. I doubt it severely, bhai. Unless like Madrid pull off a madness somewhere else and बड़ा एक out of the blue किसी target को उठा लेती है वो. But I personally feel if you have to mold a creative force, it has to be Arda Güler. Arda Güler ही होना पड़ेगा. ट्रेंट नहीं आएगा भाई जैन में. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. अगर आपने जैन में ट्रेंट खरीदने की कोशिश करी, लिवरपूल चूस लेगी आपका एक एक पैसा. पेड्री बस बिल्कुल. सीबी फॉर मैड्रिड विच दे कैन गो फॉर. कोई फ्री में ही आएगा दोस्त, समबडी फ्री में ही जो है, नोबडी पेड. क्रूज जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. चुआमेनी है ना, इज बेटर. अरे चुप करो. आर्दा ही सोल्यूशन है, सिंपल सी बात है. बस वही जोनाथन टार जैसा डिफेंडर आ सकता है. आप उसको जनवरी में लोगे. बायर्न म्यूनिक से लेवरकूसन ने आई थिंक 25 मिलियन की बात करी थी. मुझे नहीं लगता अगर आपको 6 महीने वेट करके वो फ्री में मिल जाएगा ना, मुझे नहीं लगता मैड्रिड उस पर भी पैसा खर्चेगी. सलीबा लेने वाले, अगेन यू कैन गेट ऑल दीज प्लेयर्स, चाहे आप रोमेरो भी ले लो. ऑल आई एम सेइंग इज यू गाइज विल हैव टू प्ले क्रेजी मनी. सो टा seems to be the kind of guy Madrid will go for. Madrid, except Militao, don't spend money on defenders. Don't spend money on defenders at all. Militao is the last guy you spend the money on. वो भी 45-50 मिलियन. सलीबा के कॉन्ट्रैक्ट में भी 4 साल और है. वी ऑल नो पापा पेरेस इन साइनिंग एनीवन इन जैन. एंड जैन में बड़ा मुश्किल है यार. जैन में अगर आपने किसी को साइन किया, कैसे उमेश भाई, जैन में अगर आपने किसी को साइन किया,
You will have to sign somebody from a non UCL club, बिकॉज यूसीएल का लीग फेज ही 29-30 जैन तक चल रहा है. केमिक आएगा. मुझे लगता है केमिक की प्रायोरिटी तो हमेशा से ही बायन रहेगी. ही इज अ बायन बॉय थ्रू एंड थ्रू. थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 10 months जीरो बॉल नॉलेज. लव यू सो मच ब्रदर, लव यू सो मच. एग्जैक्टली 30 जनवरी तक ग्रुप स्टेज खत्म होंगे. जनवरी में लपोर्टा वुड बी सिक. कोई ब्राजीलियन यंग टैलेंट ले आएंगे फिर से. रामोस ले आओ. ये ब्राजीलियन यंग टैलेंट अगेन बॉडीज भरने के लिए तो बहुत. आप तो लालीगा से किसी टीम से उठा लो ना फिर, अगर बॉडी ही भरनी है आपको, है ना. फिर क्यों ये ब्राजीलियन यंग टैलेंट फैलेंट करना है. तो आई डोंट नो मैन. आई मीन कहीं ना कहीं से तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. क्रिएटिविटी का सोल्यूशन तो इज टेकिंग अ शॉर्ट टर्म पेन मेरे हिसाब से. एंड आर्दा गुलर को ही बनाना पड़ेगा. बरेला फ्रॉम इंटर, इट्स गोना टेक वर्ल्ड रिकॉर्ड फीस अगेन. रियाल माइट. पेड्रो पोरो की बात कर रहे थे वो लोग. पेड्रो पोरो की बात कर रहे थे. पेड्रो पोरो आ भी जाएगा, मजाक भी नहीं कर रहा. बट पेड्रो पोरो को कितने में खरीदा था स्पर्स ने? पेड्रो पोरो को स्पर्स बॉट फॉर 40 मिलियन. 40 मिलियन यूरोस के लिए खरीदा था स्पर्स ने 2023 में, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे. उसके कॉन्ट्रैक्ट में अभी 4 साल और है. और यू गाइज डोंट नो, यू गाइज डोंट नो हाउ टफ अ गाय डैनियल लीवी इज. नहीं, बारसा की बात अभी इसके बाद होगी. यू डोंट नो हाउ टफ अ नेगोशिएटर this Daniel Levy is, bhai. If he's bought somebody for 40, he is gonna ask you for 60 and वो खत्म. हाँ डूड, लिवरपूल पे हमने सबसे पहले बात की थी स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम. हाँ हाँ, आई नो आई नो आई नो. आई थिंक यही सब होगा कि फ्रिम्पोंग, जिसका आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, जेरेमी फ्रिम्पोंग. कॉन्ट्रैक्ट, जेरेमी फ्रिम्पोंग कॉन्ट्रैक्ट 28 तक, तो उसमें भी काफ़ी साल है. हाँ मैन, इवन फ्रिम्पोंग के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे. वैन डाइक, ट्रेंट, साला का क्या सीन है? अगर वो चले जाए तो कौन से ऑप्शन सही रहेंगे? जितना मेरे को सुनाई दे रहा है कुमारजीत, वैन डाइक इज क्लोज, ट्रेंट इज गोइंग टू बी क्लोज, साला का भी कुछ आता पता नहीं. नीको पास टू रियल. कोमो पे आपने लोन पे बेचे, बेच ही दिया है. अगर बायबैक वगैरह तो आप ले सकते हो. बट इफ मड्रिड आर बाइंग पेड्रो पोरो और टीए, देन इट मींस इट्स कर्टन्स फॉर कारवाहल. आई थिंक इट्स उसकी इंजरी प्लस एज इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इशू मैन. फ्रिम्पोंग का आर्स रिलीज क्लॉज है ना? फ्रिम्पोंग रिलीज क्लॉज, आई वेरी सरप्राइज्ड. Frimpong has a 40 million release clause in his contract that is active at present, but the clause expires after the Euro 2024 final. Khatam khatam. Yeah, that was it chat. यूरोस तक था उसका 40 मिलियन का. यूरोस तक था, यूरोस तक था. देखो, जो मैंने न्यूज पढ़ी है उसके हिसाब से यूरोस के फाइनल तक था. ठीक है, दैट्स इट. 24 जुलाई को आ गया था. द क्लॉज हैज एक्सपायर्ड, दैट्स इट. अनलेस फब्रिजियो ने कुछ ट्वीट किया, पता नहीं. आर्सेनल एलेक्स बाइना के लिए जाएगा क्या? नहीं, मैंने तो अभी तक कोई भी नहीं सुना. इफ यू गिव मी एन ऑप्शन बिटवीन फ्रिम्पोंग एंड पोरो, आई विल पिक पोरो. पोरो इज अमेजिंग इन अटैक, टेरेबल इन डिफेंस. शाबी अलोंसो टू रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन. भाई हम अभी पहले इस सीजन को खत्म कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट. फॉर मी, आई थिंक रियल मैड्रिड आर इन हॉट सूप and it will take sacrificing 5-6 games, 7 games, maybe even 10 games. Sacrificing matlab you will not be playing your best football. You will have to rely on your front four to give you goals. But Arda Güler has to be your creative solution. How talented La Liga players stay at mid clubs for so long? I mean, I don't think so. इतने सारे La Liga players have moved to Bundesliga, have moved to top PL clubs, have moved to like yeah. एलेक्स गार्सिया देख लो, जिरोना के लिए कितना सही था, लेवरकूसन में खेल रहा है. पीएल रिव्यू उमेश भाई बहुत पहले कर लिया था मैंने. सारा पीएल रिव्यू 2 घंटे 2.5 घंटे 2.5 घंटे तक मैंने पीएल रिव्यू किया.
आपका स्ट्राइकर फॉर आर्सेनल कौन होगा? अभी तो हैवर्ट्स, उसके अलावा सेस्को। ये ब्राइटन का मैनेजर बहुत सही कर रहा है, नॉट गोना लाई, ही इज अ गुड गाय। ऑलराइट, we have discussed Madrid problems, we have discussed possible formation. I personally think you have to go back to the 4-4-2 with Arda Guler always being there. um Defense में Chouameni will have to rotate, simple सी बात है, Chouameni will be a defender. So Madrid fans, non-Madrid fans, La Liga fans, does Madrid win La Liga this season? Not can they, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, अभी तो बहुत लंबा लीग सीजन है, ऑल दोज थिंग्स. Do you think at some point Real Madrid can leapfrog Barcelona or not? Or second is the best they can do this season? यार जब से दिल्ली डायनामोस फोल्ड हो गए मैंने आईएसएल नहीं देखा. रॉड्रिगो अगेन सैक्रिफाइस्ड. नो. दक्ष भाई, अम्बापे का सीन रियल है या फेक है? यार ये सारी न्यूज़ तो आती रहती है. इट्स टू अर्ली टू से रियल है या फेक है, अभी पता चल जाएगा. आई थिंक सो सर, जीरो बॉल नॉलेज. Yes, second is the best. 50-50. Yes, they can. No, says Piyush. Maybe not. And look, it's not. This could be the table till the end of the season where Real are always 3 points behind Barcelona. But I just feel right now, Barcelona are just better equipped to handle all adversity. मेरे हिसाब से अगर आप रियल मैड्रिड को खोलते फॉर्टमॉप पे, देखो चैट, मैड्रिड का स्क्वाड इज गुड. द प्रॉब्लम इज अवेलेबल कौन कौन है. लुक एट दिस. Thibaut Courtois, Lunin, good defenders. Alaba injured, fit, injured, fit. A lot of people will say useless, fit, fit, fit. So they have one, two center backs, three if you count Vallejo, two center backs, one right back, two left backs. That's bad, dude. Midfielders, fit, basically a center back, fit, sometimes fit, old. 1, 2, 3 मिडफील्डर्स, ये भी कामाविंगा कब इंजर हो जाए पता नहीं, बट 3 मिडफील्डर्स एसेंशियली जो हमेशा फिट रहेंगे. केस समटाइम्स फिट बट अदरवाइज गुड. फिट पता नहीं कब चांस मिलेगा. टू यंग. अटैक इज स्टैक्ड. दे हैव 6 फॉरवर्ड्स एंड 6 मिडफील्डर्स. चैट, 6 फॉरवर्ड्स एंड 6 मिडफील्डर्स, crazy. For 3 to 4 positions they have 6 midfielders. For 3 to 2 positions they have 6 forwards. And for 4 positions they have. This squad is so slow. मतलब बहुत छोटा है यार इनका स्क्वाड, मजाक भी नहीं कर रहा. जोन मार्टिनेज, या वलेहो को खिला दो, बारसा पक्का 10 मार देगी कम से कम इन द फर्स्ट हाफ. लेट्स इग्नोर वलेहो. वलेहो इज आवर क्रिप्टोनाइट. Lenin says we will definitely win the league. El Clasico will give most of our answers. I don't think so, you know. I was गलत टैब से बैक चले जाए. आई वाज जेन्युइनली थिंकिंग अगर मैड्रिड एल क्लासिको जीत जाती, व्हिच दे कैन बाय द वे, आई थिंक it would be a huge result for Barca if they win the El Clasico at the Bernabeu. But I just genuinely feel even if Madrid win the El Clasico and they draw na, I think longer term in the league, I think Barca wins. I think longer term in the league, Barca are just bet. Because think about this. जो मैड्रिड को इंजरीज भी हुई हैं, बारसा का क्या है? बारसा का है फर्मिन वापस आ गया, ओल्मो वापस आ गया, गावी वापस आ गया, फ्रेंकी वापस आ गया. जो इवेंचुअली इंजर हो जाते हैं वो 6 से 8 हफ्ते या 2 महीने या 4 महीने में आ ही जाएंगे. मैड्रिड को जो इंजरीज हुई हैं, कारवाल इज नॉट कमिंग बैक, आलाबा मोस्ट लाइकली इज नॉट कमिंग बैक. So even the injuries that Madrid have, चलो ठीक है ब्रहीम आ जाएगा, but he's basically filling up an already stacked attack. ठीक है, सेबायोस आ जाएगा, फाइन, he'll be a body in the midfield. बट जो डिफेंस में इश्यूज हैं मैड्रिड के सबसे ज्यादा जो मुझे लगते हैं, और क्रिएटिविटी वाले इश्यूज हैं,
वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वापस आने के बाद, अनलेस डैनी सेबायोस हैज द बिगेस्ट रेमोंटाडा ऑफ एनी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, मुझे नहीं लगता वो इश्यूज फिक्स हो पाएंगे। बारसा की इंजरीज की थिंग यही है कि बारसा की जब इंजरीज वाले प्लेयर वापस आएंगे दे विल बी फाइन, वो डेफिशिएंसीज मिक्सअप मतलब हो जाएंगी। बट अभी मुझे लगता है मैड्रिड के अगर कोई प्लेयर वापस आता है, I they don't solve any problems. That's my biggest thing. That's my biggest thing. Apparently Carlo doesn't even consider Vallejo. ना ना, अगर ये जिस दिन हो गया मैं तो भाई आई विल डू अ 24 hour stream Vallejo to recreate that city pick with Barcelona. Yeah, I मुझे सबसे बड़ा मैड्रिड का ये जेन्युइनली आई एम नॉट इवन लाइक थ्रोइंग शेड और एनीथिंग, बारसा से जो रिटर्न हो रहे हैं ना इंजरीज वाले, आई पर्सनली फील वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बॉडीज की, क्रिएटिविटी की, अटैक की, डिफेंस की, राइट? लाइक बारसा रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी फील स्ट्रॉन्गर, but if Brahim comes back fit and fine, he is already going to play at Age, right? But you already have Vinny, Rodrigo, Endrick, Mbappe, and then उसके ऊपर आप और like आइसिंग के ऊपर और आइसिंग कर रहे हो। So वही वाली बात है यार। I just don't know, man. What do you guys think? And then we'll move to Barcelona. Imagine Lewandowski winning Pichichi beating Mbappe. That would be my horror for real. भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जिस लेवल पे लेवेंडोस्की अभिनव अभी ऑपरेट कर रहा है, इट्स क्रेजी। One more injury in defense, season's done. I think it's a very tough season, man. Something will have to give, chat. Something will have to give. Either you will have to spawn a top level talent जैसे बारसा ने कुबारसी के साथ किया। अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि बारसा के पास अराहो वापस आ रहा है यार। They'll be even more difficult to score against. Khair, I will just say this. Mbappe, I will consider you signing of the century if you dunk a hat-trick on Clasico and goalless the whole season. Acha. Yeah, something has to give. Either you'll have to spawn a mega level talent in your academy जो suddenly आके defense sort कर दे, और पेरेस को चेंज करना पड़ेगा ये अपना बाइंग का तरीका, एंड यू विल हैव टू गेट somebody from some team, from a Valencia or from a Celta, or I don't know, anyone else to fill in the body right now. जैसे आप लोग वो स्पानियोल से ले आए थे, क्या नाम था यार स्ट्राइकर का, भूल तो, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट हिम यार। 1.5 million का स्ट्राइकर था जो आप स्पानियोल से लाए थे, जिसने आपको चैंपियंस लीग जिताने में इतना बड़ा करा था, क्या नाम था उसका, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम? होजिलू भाई, you will have to get somebody like होजिलू। कृषि का तो वो पहले देखना पड़ेगा उसका रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, कृषि को तो रजिस्टर करना पड़ेगा। टा फॉर मैड्रिड इन, लुक इफ यू गेट टा इन जैन, सॉर्टेड मैन, genuinely sorted. But problem is this, Leverkusen are also in the Champions League, and Champions League का लीग फेज 29 से 30 जनवरी तक चल रहा है, वन डे बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स। लीग फेज, प्लेऑफ नहीं, लीग फेज। Unless Leverkusen top 24 के बाहर होती है, they will not let anyone go. No chance. मैट्स की जगह होगा क्रिसी, हाँ ये भी तो हो सकता है। If Alaba is back, he can play CB and Militao to RB. Yeah. नेमार जूनियर के रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं कि लिवरपूल विल कंसिडर सेलिंग ट्रेंट इन जन। आई थिंक if by Christmas Trent has not agreed to a contract extension, then maybe, but it will cost you crazy money, brother. I am not even joking. 50, 60, 70 मिलियन लग जाएंगे, इजी लगेंगे ट्रेंट के लिए। देखो सिंपल सी बात है, ट्रेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करे बिकॉज ही डजंट फील वैल्यूड, ही स्टिल लव्स लिवरपूल इनफ कि वो एक अच्छी ट्रांसफर फीस के लिए ही जाएगा। एंड इवन इफ यू वांट टू बाय ट्रेंट इन जैन, लिवरपूल विल हैव all the cards in their hand. At least they should have signed Hummels. That's actually not a bad shout when he was available in the summer. Something has to work out. All I want is how we play Barca, not targeting win, but the mindset. 60-70 is peanuts for Trent. Yeah, for sure.
Why Barca ruled out of Trent transfer? Because Trent is not just transfer fees, it's also wages. And you, if you've come out of a bad situation with wages ना, मुझे नहीं लगता आप सडनली और इतना ज़्यादा ले लोगे फिर से 1-to-1 वाले ट्रैवल में आने के लिए. ट्विटर पे चल रहा है नेमर आर्सेनल सिंस यू विल नॉट. भाई आपने हमारे विंगर्स देखे हैं कितना भागते हैं. वी कांट हैव दैट गाय. लपोर्ट was a good option. यार नेक्स्ट समर तक ऑल विल बी सॉर्टेड फॉर श्योर बाय द वे. बट वही बात है ना, हम इस सीजन की बात करें कि अभी व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर रियल मैड्रिड. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू आई डोंट सी एनीवन फॉर नाउ. इट माइट बी अ प्रेमेच्योर जजमेंट एंड वी कैन ऑल बी रॉन्ग एंड आप लोग मुझे गाली दे सकते हो, बट यू गाइज नो आई लाइक रियल मैड्रिड, बट आई जेन्युइनली कैनॉट सी एनीवन बियॉन्ड बार्सिलोना फॉर द लीग दिस सीजन. They have a top manager who's playing top football. Look, इस पिक्चर में ही चैट, इस पिक्चर में ही ये बंदा गायब है और आपका डीएम सेंटर बैक खेल रहा है. अगर आप यही सिस्टम भी खिलाओगे ना, यू डोंट हैव प्लेयर्स टू प्ले दिस सिस्टम ऑल्सो. राइट बैक कौन करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्त. आई जनरली डोंट अंडरस्टैंड हु विल प्ले राइट बैक अनलेस एंचेलोटी ने फ्रैंक गार्सिया को राइट बैक कर लिया. 28 goals. Yeah, brother. They've scored 28 goals in 9 games. That's insane. 3 goals per game से भी ऊपर के एवरेज पे चल रही है. 19 का GD है इनका. 19. Their GD is the same number of goals Madrid has scored this season. Can you believe it? Their GD. Vasquez it is. I know, but कितनी games? Valverde पर RB. अरे आप लोग एक्चुअली वेलवर्डे को राइट बैक खेल रहे हैं. Yeah, he is. And worst part is he goes to France. उसका लोड भी कम नहीं हो रहा यार. छी एम्बापे शर्म कर ले दल्ले. That's insane, man. Barcelona is operating at an all-time level. Next summer, देखो, I will just say this, Ajay bhai. Whenever this 1:1 issue gets solved, it will get solved. I have been hearing it for 2 years. इस साल 1:1 हो जाएगा. हमने लिबेरो बेच दिया. इस साल 1:1 हो जाएगा. हमने नाइकी के साथ कर लिया. We'll see. I can't see Vasquez. You don't have a choice, brother. You don't have a choice. Valverde has played RB before. Here's the problem with playing Valverde as right back. Who is your midfield then? If Chouameni is centre back to give Militao some rest sometime, and Valverde is right back, then Kamavinga and Modric अगर आप ऐसे भी खिलाओगे, गूलर या ब्रहीम इधर खेलेंगे. मतलब such a weird system. Is Frankfurt up for the Bundesliga title? Good question. We'll visit that. वही तो मैं वही कह रहा हूँ लेनिन. मैं वही कह रहा हूँ कि क्या होता है, ये न्यूज आ जाती है कि बस यही करना बाकी है, देन वी आर बैक टू 1:1, बट इट्स बीन हैपनिंग फॉर 2. सो व्हेन इट हैपेंस वी विल क्रॉस दैट ब्रिज कि अब किसको साइन कर सकते हैं हम लोग. दैट्स इट. कामा मीम विल बी बैक. दैट्स ट्रू. लेट्स जस्ट फॉरफिट द सीजन, लेट दिस गाइस रेस्ट. ओके, सो बेस्ट केस फॉर मैड्रिड दिस सीजन. अपना बायस हटा के, आई नो आपको हाला मैड्रिड बोल के आपकी छाती फूल जाती है, आपका खड़ा हो जाता है, बट व्हाट इज द बेस्ट फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन? Only Militao and Vasquez will be at right back. Yeah, looks like it. But then that leaves you at centre back light. Academy, any talent chat? Madrid fans, any academy talent? I am not even joking. I will be pleasantly surprised if Madrid win the league this season. The problem is, इतनी इंजरीज के बावजूद भी बारसा इतना हाई लेवल पे परफॉर्म कर रही है ना, मुझे नहीं पता. Madrid can still win, by the way, the Champions League and all that stuff. But हाँ, जोन मार्टिनेज. La Liga in at least semi plus domestic cup. You Killer X thinks okay. Del Rey deep run, CL run like season before.
हाँ, जेकब रेमोन को भी तो हो गई थी। टियर नहीं ले सकते, वो लेफ्ट बैक है यार। मैक्स टू मैक्स लेफ्ट सेंटर बैक खेलेगा वो। बट ही इज वेरी इंजरी प्रोन, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। बेस्ट La Liga plus UCL was third UCL quarterfinal out coming from a Barca fan. Second in the league and UCL out in semi-final. So Perez by some good defenders. Acha. Bellingham lack of goals, clutch moment also gone. Early prediction for Clasico. I'm gonna go for a 2-2 draw. I'm gonna go for a 2-2 draw. I think I think Lewandowski. All honestly, all depends on how Real Madrid handle Lewandowski. If Lewandowski is in form now, और वो लेवेंडोस्की का गुड फॉर्म इज बिकॉज ऑफ रफीनिया एंड लमीन यमाल एंड पेड्री he will cook by because one of the best things that Flick has done is not making Lewandowski do all the hold up play. Yeah. After buying one player, they stop signing players. Yeah, but the thing is this, right? Mbappe is not like he is free, but the salary is insane. It's an insane salary. चलो बार्सिलोना पे बात करते हैं चैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सीक्रेट द बेस्ट फॉर बार्सिलोना इज फर्स्ट एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग बेस्ड ऑन हाउ रियल मैड्रिड इज प्लेइंग राइट नाउ नहीं नहीं आपका कमेंट दिख रहा है कॉस्मिक चैट बेस्ड ऑन हाउ रियल मैड्रिड इज गोइंग राइट नाउ like coming second will be a massive disappointment for Barcelona, I personally feel. या ये कोई वॉच अलॉन्ग नहीं, आज कोई मैच ही नहीं चल रहा है दोस्त, बट ये लाइव स्ट्रीम ही है. आई थिंक the worst case scenario will be a genuine disappointment. I think if Barca, I know 9 ही गेम हुए हैं दक्ष भाई, सीजन उलट पुलट सकता है, मड्रिड जनवरी में प्लेयर बाय कर सकती है, देन वील हैव अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. बट जिस तरीके से बारसा खेल रही है ना, ये 19 का जीडी which is basically more than any goal, any amount, as much as Madrid के goals, but more than any amount of goals any other team has scored. It's crazy. ये तो भाई विलारियल एक वैसे बड़ी वाइल्ड कार्ड सी टीम है. वी आर कुक्ड. इसमें कुक्ड क्या है? Perfect time to win the league for Barcelona. I think Hansi Flick, if he wins the league in his first season at Barca now, cult hero bhai. After so long, maybe after 2020, I'm confident about this Barca squad. The best part is we have landed a good manager and hope he stays for 3-4 seasons at least. I think this manager is, I'll be honest, जब सारे नए managers आए थे ना, I said मेरे लिए top 2 managers will be between Slot and Flick, and I said I just want to see how Flick survives in Barca. वो बच्चों को खिलाता है या नहीं, रनिंग स्टाइल, ये सब वो सब. And I was like, Slot will take to Liverpool like duck to water. And I said Slot is probably the smartest appointment, and I'm wrong. Flick is by far, I think, the best appointment this summer. Yeah, I was wrong. Because Flick not only has he instilled his own identity to Barcelona, but he's also taking in La Masia and their identity as well. Youth ko promotion, different तरीके से खिलाना. It's only when Flick has to make like wholesale changes, जैसे उसको सेल्टा के अगेंस्ट, नहीं किसके अगेंस्ट है, किससे आ रहे थे, ओसासुना से आ रहे थे. Who did you guys lose against? Osasuna se, yeah. I think it's only when you have to change everyone is when you don't look good. Ankit says our GK will either be Pena, who concedes an average of 2 goals per match, or a retired guy, Osasuna. Yeah. Flick is modern Ancelotti. No, Flick is top guy. Top guy. The best thing Flick will have done is the way he has instilled La Masia in Barcelona. मेरे को हमेशा यही डाउट लगता था कि देखो बारसा का एक प्ले स्टाइल है, एंड अगर आप उस प्ले स्टाइल से थोड़ा डिविएट कर जाते हो ना, फैंस को पसंद नहीं आता है. जैसे जावी का जो टाइटल विनिंग सीजन था, उसमें ऑफ कोर्स ही हैड टू बी अ लॉट ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिकॉज बच्चे थे यार, इतने सारे बच्चे थे. एंड आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, व्हाटएवर फ्लिक इज एंजॉयिंग राइट नाउ हैज बीन प्लांटेड बाय जावी.
But Flick is top guy, dude. Top guy. I am very surprised. Now, in hindsight, तो of course 2020 होती है. There were so many clubs who needed a new manager, and I'm surprised. Juve needed a new manager. United could have gone for a new manager. Flick is a great man manager. He backed Araujo, which made his contract renewal situation easy. Flick is an underrated man manager, I feel. A lot of people think he is confrontational, German, and all that stuff. Mbappe has not been the same since 1 year. यार अम्बापे के अराउंड ना जस्ट थोड़ा सा बारसा से हटके अम्बापे के अराउंड बड़ी अजीब अजीब न्यूज़ आ रही है. एक तो वो केस वाली न्यूज़ है. But then there's news about his alcoholism also and how he's, I don't know, matlab, there's a lot around Mbappe. I just hope he gets the help and he gets back to the Mbappe we know. Olmo, Gavi, Fermin, FDJ back. Almost return will improve our attack by at least 2x. People have forgotten his utility in initial matches. Exactly. पर वो रोटेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हमारे मेन प्लेयर्स वापस आ रहे हैं. एग्जैक्टली. सो अराहो विल बी बैक. इनीगो एंड कुबारसी में से एक को रेस्ट मिल जाएगा. बाल्डे विल इवेंचुअली पिक अप. आंसू का देखना पड़ेगा. आंसू रिटर्निंग कुड ऑल्सो मीन यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन फेरान एज मच. रफीनिया तो हैज बिन अ कंप्लीट गॉड दिस सीजन. लेवेंडोस्की हैज बिन फैंटास्टिक. लमीन इज फैंटास्टिक. फर्मिन आ जाएगा. पेड्री को आपको रेस्ट मिलने को मिल जाएगा. गावी आ जाएगा. फ्रेंकी आ जाएगा. You don't have to rely on Casado all the time. मतलब it's genuinely like सारी चीजें अच्छे से मिश्रण होके बारसा के लिए काम कर रही है. I think he's not at his best mentally. I also think so. He's also missing the city of Paris. Yeah, yeah. Good news for us is Olmo, Gavi, Frankie, Furman, Ansu back. Chesney 100% fit could start against Sevilla again. I will just say this to Barca fans. Again, I can be wrong, just like I was wrong about who's the best manager appointment in the summer. Chesney, there's a reason he retired. Is because he was getting past his best ability. He is not athletic as he was. He is a good character to have in the dressing room. Top mental guy. Top mental guy. He was ahead of Allison at Roma also at one point of time. Top guy. But temper your expectations. I'm not saying he's going to be bad. I'm just saying temper your expectations. मेरे हिसाब से. I was also surprised that Flick wanted to come in all this mess and still performing the best. Yeah. Before the season started, did you believe that Barca being second is a disappointment? No, I told on my Discord when जब season आ रहा था and Flick आ रहा था and pre-season games चल रहा था, I was like, be secretly rooting for Barca because मुझे लगता है Madrid ने super team assemble कर दिया है. और अगर बारसा जीत गई मतलब इट विल बी एन इनक्रेडिबल हरक्यूलियन परफॉर्मेंस बाय फ्लिक. बट हरक्यूलियन तो फिर भी चल रहे हैं इनका. आई थिंक शेज इज बेटर देन पेन्या. वो देखना पड़ेगा यार. वो देखना पड़ेगा. Fraud and PayPal fooled us by scoring pens in the World Cup. There's no manager who can handle Mbappe's situation better than Carlo. Vinny was crap, but we see what Carlo has done with him from not playing Ballon d'Or. The thing is this, यार. I think Madrid पे क्या है ना कि if you are going to be the star man, right? जिसके पीछे Madrid 2 साल से पड़ी हुई है, you know, all those stuff. You can't afford a slow season. That's the thing. Imagine Barca with Araujo and Chrissy. Yeah, भाई बहुत बहुत बहुत. मैं वही कह रहा हूँ. Everything is falling in the right place at the right time for Barcelona. देखो यार, you guys know better. I'm not saying Peña is good and better than Chesney and all that stuff. I'm just saying लोग were all in up in arms about we need to replace Ter Stegen and Peña के 2-3 games के बाद देखा we had this beast sitting on the bench. Why didn't we go for him? Why didn't we play him sooner than Ter Stegen? And then Peña became Peña and then everyone was like we missed Ter Stegen. Unpopular opinion, I think Kamavinga will have a massive sin. Chalo, let's finish Barcelona and then we'll take those randoms and then we also have to go to Bundesliga. Chat. Worst case scenario for Barcelona. Worst case scenario for Barcelona. From here on. Last season. Last season तो अलग ही level चल रहा था बारसा का. Third. You think Atleti can make a move, chat? Third in the league and quarters. No trophy. I think this would be the worst. I think this team right now,
This Barcelona team is too good not to win a single trophy this season. I think even if Barca comes second and go to the finals of the, I think this team is too good not to win a trophy this season. Second and semis. We'll get a good GK in the summer. It's already official. Should go for Costa or Vicario. Vicario is a top GK IMO. Vicario is a good keeper in shot stopping for sure. But again, you are dealing with the worst person to deal with, man, in football. That is Daniel Levy. Mazak bhi nahi kar raha. People don't know the real Mbappe. They have that image of World Cup Mbappe. Think perform like that day in day out, but that's false. For me, as a Messi fan, watched all the PSG games and he's not that great. Says Poke Art. All right. Out of the round of 16, अभी देखो अभी तो बारसा मोनाको से हार गई थी तो चैंपियंस लीग could be something for Barcelona. I'm not going to make any claims for Barcelona's performance in the Champions League because I still think it's a team. Even with Olmo, Araujo, everyone back, कुछ भी हो सकता है Champions League में, as we saw with Monaco. So I'm not going to make any claims on the Champions League. But like I said, I think this team is too good not to win any trophy. Third in the league. थर्ड तो यार मतलब थर्ड फॉर बार्सिलोना विल मेरे हिसाब से विल बी स्पेक्टैकुलर कोलैप्स. स्पेक्टैकुलर कोलैप्स होगा. दैट्स हाउ गुड दे आर. राफ को इंजरी हो गई? नहीं नहीं. Simeone to win it. I think the most wildest thing will probably be Simeone to win. I think everyone expects either Barca or Real to win it. I think 75% expect Barca to win it and 25 Real to win it. Yes, Simeone winning it would be insane actually. एक बार बारसा के अपकमिंग गेम्स देख लेते हैं साहब. Fixtures for Barcelona. They play Sevilla, who are not that great. Bayern, I'll be honest, chat. No hate to Bayern fans. At home, I think Barca wins this one. Especially if Bayern के defenders को injury हो गई जैसे अभी आ रहा है. देखो Bayern का defense is their weakest point and Barca का attack is their strongest point. And I think Lewandowski will cook in this fixture actually. El Clasico, unironically, I think is a tougher game for Barcelona than Bayern Munich. And again, that's got nothing to do with Bayern Munich. It's just a strength versus weakness thing. I think even when Barcelona plays El Clasico, that front attack na has a lot of potential to hurt Barcelona. फिर एस्पानियोल के साथ डार्बी है. बेलग्रेड को हरा देंगे. सोसिएडाड इज हॉट एंड कोल्ड. ये देखना पड़ेगा वापस. सेल्टा कुड बी अ टफ कस्टमर. वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद है. दिस शुड बी एन ईजी विन मैन. नॉट इवन जोकिंग. शुड बी एन ईजी विन. बारसा का वर्स्ट फर्स्ट है. विंसेंट कॉम्पनी वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स. जावी के टाइम भी लोग बोल रहे थे हम बायर्न के अगेंस्ट जीतेंगे लेकिन बट दैट वाज डिफरेंट बायर्न आई फील. सेल्टा इज अ बोगी टीम. हाँ मैंने वही कहा. फिर से इंटरनेशनल ब्रेक. या ब्रो 4 हफ्ते में फिर से 16 on 16 सस्काविया. मेरे हिसाब से 3 6 1 7 10 13 16 16 out of 18. बारसा का वर्स्ट ओनली ला लीगा. ओह यू दैट कॉन्फिडेंट. हाँ सीएल गेम्स देखो. अरे अब टीम की सीएल गेम्स भी देखने अलग से कैसे पड़ेंगे यार. नहीं इतना मैं नहीं कर सकता. सॉरी. They bench Farhan for lifetime if they want to achieve anything. They should just protest at this game at this time. Useless friendly matches that no one watches. We are winning the Clasico easy stuff. I think Clasico is going to be a draw or a Madrid win. Unpopular opinion. हाँ मैंने रियाल के देख लिए. If Simeone says to his teams they want to win the league, they will win it. I am a Madridista, by the way. All right. Real Madrid fans, one question to you. One question to you. Barca needs to make sure. हाँ ठीक है. Real Madrid fans, one question to you. If you are not winning the league, would you rather Barcelona win it or Atleti win it?
इफ इतनी बड़ी स्ट्रीम, अब से इतनी बड़ी स्ट्रीम्स करेंगे हम. If you had to pick one team to win, says easy stuff like he wasn't losing every time. Barca winning. I think Clasico में वो confident होंगे. ना, you can't say Villarreal. If you had to pick one team between Atleti and Barca to win, who would you win? Put yourself in Manchester United shoes. They have to always pick between rivals. Atletico, Barca. Barca because they deserve after all these injuries. Barca, Atletico, Barca, Atletico. It's a bit split, huh? बारसा विन इट. देख देख अपनी सेकंड फेवरेट टीम को जिता रहा है साले. आई स्वेयर आई हेट एटलेटिको. बोथ लूज, वो तो यार आइडियल हो गया ना. इजिली बारसा. ओके आई हेल्प. Bayern home, Atlanta home, Dortmund away, Benfica away, all tough fixtures. Bayern home should be winning. Atlanta home can be a bit tricky. Dortmund away कुछ नहीं कह सकते. Benfica away should be winning. बारसा आओ कभी एनफील्ड पे. कैन यू इमेजिन चैट, बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल अगर हो जाए तो क्या गेम होगा भाई. आई डोंट वांट टू सी एटलेटिको विन एट ऑल. बारसा ही जीत जाए, वी डोंट वांट एटलेटिको फैन टू सेलिब्रेट. फेयर इनफ. ऑलराइट, let's move to Bundesliga and then we will end the stream. Bundesliga, Fortmob, Bundesliga, where is it? I'll be honest, when the season started and how Bayern Munich were going, I was like, Bayern Munich is winning it. Easy peasy, no squeezy. ठीक है? I'll take Atleti win if they get relegated in 5 seasons. Short corner would be remembered. Barca winning Bayern, isn't that bold? It is. But it's mostly the reason I'm making that prediction, and again, maybe I switch it. But the reason I'm making that prediction is because I think Bayern's weakest point is their defense. That Upamecano Kim Min Jae wala thing is not working right now. And I think one or both of them are injured right now. And I think Lewandowski is in such a great amount of form with the players behind him. मुझे लगता है, if nothing else, Barca can just outscore Bayern. Bayern will score, by the way, with Kane, with Olise and everything. I just think Bayern can outscore Barca can outscore Bayern. But that's what I feel right now. Bundesliga कौन देखता है भाई? ऐसे मत करो, ठीक है? Kim isn't that good. He's not fit in मेरे हिसाब से Bundesliga, which is a bit scary. It's a bit confusing. Look, Bayern are also in a crazy run of form जहाँ पे बारसा ने 28 गोल्स 9 कंसीड किए थे. इन्होंने भी 20 मार के साथ ही कंसीड किए. 6 गेम हुए हैं. So they have 3 games over Barcelona. I'm sure they'll catch that. But the last 2 games जिसमें Bayern Munich खेली है against those title contenders, Leverkusen and Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt के against वो जीत भी रहे थे, by the way. But they've dropped points in 2 consecutive games. So they've not lost any. Neither has Leipzig, to be honest. But it's scary. But I think थोड़ा सा respite मिलेगा. Frankfurt play against Leverkusen, if I'm not wrong. Yeah. So these guys play against each other. Someone will drop points. Freiburg is also, but Freiburg will eventually fall off. Dortmund has very surprised me a lot. But Bayern Munich के बारे में बात करते हैं. In the league, they have been good, but form-wise, Champions League में they lost to Villa, which was, I'll be honest, very surprising. They dropped points in 3 consecutive games, which is not going to go down well with Bayern fans. Draw against Leverkusen, loss against Villa, and draw against Frankfurt. उसके अलावा all greens, literally all greens. 9-2 against Zagreb, 5-0 against Bremen, 6-1 against Holstein, 2-0 Freiburg, 3-2 Wolfsburg, 4-0 against, चलो तो friendly वगैरह थे, 4-0 against Ulm in the Pokal. बहुत सारा उनका है. They completely beat the crap out of any team they face. But last few fixtures में थोड़ा सा इनको issue लग रहा है. Which PL team will go furthest in the UCL? Most likely Man City. Yeah, Leipzig is that high, yaar. Leipzig is that high, and that is all because of Openda and Sesko. Openda and Sesko have absolutely killed it, by the way. अगर आप इनके stats देखोगे,
ओपेंडा ने 4 गोल मारे, सेस्को ने 2 गोल मारे 6 गेम्स में। जावी सिमंस भी है इनके पास, नूसा भी है इनके पास। सेस्को के 2 असिस्ट्स एंड 2 गोल्स हैं। Gulaxi has been really, really good. They have a good squad actually, not even joking. मार्को रोज ने अच्छा सा करा हुआ है, गुलाक्सी टॉप है, क्लॉस्टरमैन, हाइनरिक्स, गिर्ट्रूडा उन्होंने खरीदा है, राउम, लुकेबा, टॉप टॉप प्लेयर्स। श्लागर भी सरप्राइजिंगली इस सीजन अच्छा करा है, हैदरा सबको पता है, बोम गार्टनर भी सबको पता है। दीज गाइज आर डूइंग गुड। वर्मीरन उनके पास आई थिंक एटलेटी से लोन पे आया। आई डोंट नो वर्मीरन इज एक्चुअली डूइंग दम, उन्होंने कुछ भी नहीं खेला, एक स्टार्ट करा है, 5 में से एक करा है, तो वर्मीरन हैजंट हिट द ग्राउंड रनिंग। वेरी स्ट्रेंज वर्मीरन साइनिंग बाय द वे, जिस जिस सर्कमस्टांसेस में वर्मीरन इधर आया लाइप्सिग पे। अटैक पे नूसा, सिमंस, सेस्को, ओपेंडा, आंड्रे सिल्वा, पोल्सन, तो अभी भी पोल्सन भाई अभी भी है यहाँ पे, इनसे बढ़िया। 14 पॉइंट्स पे बायर्न म्यूनिख एंड लाइप्जिग सेम पॉइंट्स पे हैं। Bayern Munich play against Stuttgart, which is also going to be a tough game. Where is Stuttgart? Stuttgart is in 8th right now, and Leipzig are playing against Mainz, जो 10th पे हैं. It's going to be a bit neck and neck मेरे हिसाब से. But what is the worst case scenario for you guys for Bayern Munich? I think I still will put Bayern Munich as favorites for the Bundesliga. What happened to my men Xabi? Good question. Xabi and Leverkusen have dropped a lot of points unexpectedly this season. They lost to Leipzig 3-2. उन्होंने आई थिंक फर्स्ट गेम में अच्छा सा करा था उन्होंने स्टार्ट, बट देव ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, ड्रॉप्ड पॉइंट्स टू म्यूनिक, दे ड्रॉप पॉइंट, दे वन अगेंस्ट मिलान 1-0। होल्स्टीन, भाई होल्स्टीन से कैसे हार सकते थे लोग? होल्स्टीन बॉटम ऑफ द टेबल थी, ठीक है, होल्स्टीन वाज बॉटम ऑफ द टेबल एंड दे ड्रू, लॉन्स से दे ड्रू। चलिए तो क्लब फ्रेंडलीज हैं। सुपर कप में स्टुटगार्ट से जीत गए थे आई थिंक एट द एंड। ग्लैडबैक से वही उनका वो फकरी चल गई थी, एंड में जीत गए थे। पोकाल में जीत गए बट लाइप्जिग से हार गए। हॉफेनहाइम, फायनॉर्ड, वुल्सबर्ग से जस्ट जीते थे। वर्ड्स इंजर्ड, व्हाट? नो वे। कब से स्ट्रीम कर रहा हूँ? 3 घंटे 21 मिनट। आई थिंक कम बैक कुक हो रहा है। आई विल स्टिल पुट बायर्न म्यूनिख आगे। I still think Bayern need a creative player at 10 like Wirtz, because I'll rather have Musiala one than left, but then Olise 10 and Sane right could work. रेस्ट मैंने बीच में ले लिया था यार, डोंट वरी। बायर्न विला के साथ हार गए, बारसा तो पेल देगी। ऐसा नहीं होता यार, देखो ये तो वही बात होगी कि अगर मोनाको ने बारसा को हरा दिया, तो अगर मोनाको से बारसा हार गई तो बायर्न तो पेल देगी। अब मतलब मैं ऐसे ट्रांसिटिविटी लगा दूं तो कैसा लगेगा? They're not able to control the games and defend leads. Leverkusen have been uncharacteristically bad. Bayern Munich का मैंने जितने भी games देखे, it's just the defense which needs sorting out. मजाक भी नहीं कर रहा. They get those wins, they get those leads, and then they end up conceding out of nowhere. Palinia as a DM मेरे हिसाब से has not really worked. In fact, sometimes like very surprisingly, Goretzka has come out and done okay. ठीक है. Who has been the best signing up till now performance wise for this season? Signing? Ooh. Good question, chat. Who has been the best signing this season? Let's see. Olmo is one, yeah. Congratulations, Ayan bhai. Congratulations. Olise actually, yeah. Olise has been fantastic. Olmo, Olise. हाँ, and I think that's मेरे हिसाब से like जितना भी खेला है, मेरे को नहीं लगता पलीनिया is as good a DM in that system for some reason. Bastoni as good as Saliba, Van Dijk. I'm inclined to agree. Olmo, Mbappe तो नहीं. Olise most likely. Olise. Maz has been the best for Man United. I don't think not the best in the world. Joao Neves is a good signing as well, chat. Not gonna lie. I'm happy CBs are 10 on 10. Okay. I mean, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से CBs, especially जो उन्होंने किम और उपमकानो को स्विच कर दिया ना, I don't understand that part so well. मैकटोमिने, पाव्लोविच को क्या हुआ? आई थिंक पाव्लो को इंजरी नहीं हो गई थी। आई थिंक पाव्लो को इंजरी हो गई थी। आई थिंक बायर्न
right now, apart from defense, Davies is fine. Kimmich is great. Kimmich is fantastic, man. बस वो किम बायन का एक बार स्क्वाड देखते हैं रुको बायन मुंचन squad. All right, give me a sec. Worst is Alvarez. What do you think? No, 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 no. Neuer injured. Ulreich खेलना पड़ेगा. Not injured. Retired. Sorry. Is he injured also? I don't think so. Guerrero is fine. Dyer is okay. Kimmich is great. Upamecano is not. I mean, he's fine. ईटो को इंजरी होना बहुत बुरी बात थी बस. साशा बॉय आजनू को खेलना पड़ेगा एज फुल बैक आई थिंक. अगर डेविस को आगे खिलाते हैं अगर विंग्स में भरना है. मिडफील्ड गोरेट्सका पलीनिया लाइमर इज गुड. पावलो इज फाइन. हैरी केन टॉप. सर्ज गनाब्रे ओके. कोमान ओके. साने ओके. ओलीसे टॉप. मूसियाला टॉप. टेल टॉप. अरे वेर इज इरंकुंडा. इरंकुंडा कैसे खेला? हैज ही प्लेड अ लॉट बाय द वे? Worst has been Mbappe. Upamecano has been injured. Congrats, bhai. He's been hot and cold, not bad. Amadou Onana as well. In terms of impact, probably yeah. But I think people just get super into मेरे हिसाब से. He has 5 assists DM. Ha. Yeah, I think was Barcola this season or last season? I think Barcola was also this season. No chat. Barcola's also been decent, यार. और कौन अच्छा साइनिंग है? Endrick. Eh, Barcola was last season. Olise and Palinia are fire. All right, I don't have as good an opinion on Palinia as you. Olise, yes. Savio has been good in terms of yeah. Brennan इस season तो नहीं था पहली बात. Dobvik I haven't followed, so I can't really say. Lakaka maybe if Napoli end up winning the league, who knows? Do you think Wirtz? I think Wirtz is one of those players who's a great fit anywhere. The problem is his mind is set into one club only, which is Bayern Munchen. Analysis worthy minutes भी नहीं खेले. All right. From whatever I have seen, the few minutes he has played, I personally feel okay. How many minutes has he actually played? Let me check. Where is my guy? Palinia has played one start, 4 matches, 127 minutes. That's fine actually. Yeah, it's not great. Defensively, aerial duels, chances created, touches. He's mostly played as a DM. Yeah, you're right. Onana, would you talk about Serie A? Haven't watched at all Serie A नहीं देखा. Douglas Luiz, Aston Villa नहीं देखा अभी तक. I haven't seen him. I haven't followed Serie A at all, so I can't really see. Calafiori, not the best. He's been okay. He's filled in decently. अभी मैं कोई भी आर्सेनल की साइनिंग मेरिनो, कैलाफ्योरी, स्टर्लिंग किसी को नहीं डालूंगा. कैंपोस तो करेगा ही करेगा भाई. तक भाई फाइनली नसर खलीफी का दिमाग सही हुआ. कूप माइनर्स वाज डिसेंट अप अंटिल द इंजरी. हाउ हैज दैट गाय बिन यार जो रोमा गया था? शूले था नाम. शूले था ना. हाउ इज शूले बिन? यूए पे इंजर्ड है डगलस लुइस. निकोलस पेपे भाई. निकोलस पेपे इज एब्सोल्युटली किलिंग इट एट विला भाई. कॉन्सेकाउ इज डूइंग वेल. ऑलराइट. Good night. Enjoyed the stream. बहुत बढ़िया. Thank you. Chat still 216 people are joining in. Thank you so much for joining in. Stream like कर दो अगर अभी तक नहीं किया है. We still have 337 likes. That's not done. We've been doing it for 3 hours. So at least get to 400 likes. Roma are in tatters. हाँ वो तो think De Rossi के बाद anyways. But De Rossi wasn't that great also. मतलब he had apparently a lot of issues coaching defensively. टिम्बर कंसिडर कर सकते हो हाइपोथेटिकल सिंस इट्स हिज फर्स्ट सीजन. लॉल या भाई मुझे तो लग रहा है अगर उगारते इज इंजर्ड, अगर अगर उगारते को इंजरी है और अगर मेनो को इंजरी है और अगर मगवायर को इंजरी है देन इट्स डन भाई. I don't think it was Javi's fault. I think Javi was the guy who was basically making sure these kids are ready for flick essentially. Choose one domestic treble for Arsenal or UCL win for Arsenal. Domestic treble any day. Any day. Conor Gallagher has been decent.
Bro, what? I'm talking about that R 70 million signing who is at Lille now. Con. Bro, can you tell me why is a decline in Italian football club giants like AC Milan? Money tactically are not, apart from Inzaghi, are probably not embracing tactically new systems. Coaches get fired like this. um, जैसे अभी से फंसेका की बात हो रही है, फंसेका को निकाल देंगे, मतलब एसेंशियली यही है। पेशेंस बड़ा कम है, टैक्टिकली लीग थोड़ा सा पीछे है, मनी नहीं है, प्लेयर्स बार बार लूज हो जाते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ मेरे हिसाब से। Why would I pick a singular trophy over three trophies in a single season, brother? Greenwood, but didn't want to take his name. Yeah, that's also true. Look, one of the very interesting things could be कि अगर बार्सिलोना का एक बैड फॉर्म आ जाए तो मीडिया फ्लिक के साथ क्या करेगी, बाय द वे। Anyway, yeah, that's done, chat. Chalo, we've talked for over 3 hours now, 3.5 hours done. That's almost 1/8 of a day that I've been on this computer. So I will go now and I will talk to you later. Thank you so much for joining this stream. Stream like kar dena, subscribe kar dena, get us to 21K ASAP. The more you like the stream, the more you comment on it, the more you put timestamps to tell other fans कि हमने कौन से टाइम पे कौन से क्लब की बात करी थी. Do it for your club. um, अच्छा लगेगा, स्ट्रीम ज़्यादा सपोर्ट होगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी. Some of them will also subscribe. So I will keep on doing it. And like I said, we're going to try and hit 60 hours of streaming per month. So it's good to get these hours in. So thank you so much for joining in. I hope you enjoyed it. Leave some comments, leave some feedback. अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. See you all soon. Tada bye bye. And I'll see you tomorrow for the preview. Bye bye.